As the canopies are so thick, the rainwater must pass through a complex network of branches and leaves before it can finally reach the forest floor. Fascinatingly, the forest is responsible for producing approximately 75% of its own rainfall through a process called transpiration. As trees emit water vapor from their foliage, this moisture rises, cools, and falls back to the forest as rain, perpetuating an essential cycle of hydration that sustains the environment. Acting as a natural carbon sink, the Amazon absorbs millions of tons of carbon dioxide every year. This process is crucial to mitigating global climate change by storing carbon that would otherwise heat our planet. Within its verdant canopy, every plant and animal plays a pivotal role in the intricate network of organisms that form there, providing unique insights into life's diversity. Irreplaceable ecosystem faces relentless threats from deforestation, mining, agriculture, and illegal activities. So it's vitally important to understand what we can discover here and explore ways to protect this area along with its plants and wildlife for the benefit of future generations. The Amazon rainforest is home to nearly 10% of all the species recognized worldwide. It is also a treasure trove of medicinal plants. Indigenous communities have utilized these plants for centuries to treat a wide range of diseases. In fact, over 25% of modern pharmaceuticals are derived from rainforest plants. Giant trees form a dense canopy, making the forest floor
Because the canopies are so thick, the rainwater must pass through a complex network of branches and leaves before it can finally reach the forest floor. Fascinatingly, the forest is responsible for producing approximately 75% of its own rainfall through a process called transpiration. As trees emit water vapor from their foliage, this moisture rises, cools, and falls back to the forest as rain, perpetuating an essential cycle of hydration that sustains the environment. Situated within Quizo National Park, we discover the Quizo Falls, another natural wonder of the Amazon rainforest. Quizo Falls is a single-drop waterfall, plunging an astonishing 741 feet from the edge of a sandstone plateau. The falls are located on the Betaro River, which flows over the ancient Pacarema Mountains and Sandstone Plateau in Guyana. According to tales passed down by the indigenous Atamona people, the falls were named after a chief named Kai, who sacrificed himself by paddling over the edge to save his tribe from destruction. Fearless cat, dotted with dark rosettes and spots, is perfectly suited to its environment. Known as the jaguar, it proudly holds the title of the apex predator of the Amazon. The jaguar, a solitary hunter, comes alive during the quiet moments of dusk and dawn. Unlike other big cats, jaguars have a unique love for water. They're excellent swimmers and use rivers and lakes, not just for quenching their thirst, but also as prime hunting grounds, and surprisingly, as places to play. Jaguars usually have a lifespan of 12 to 15 years when they're living in the wild. Their lives out there are shaped by the challenges they face, including territorial disputes, the hunt for food, and human threats like deforestation and poaching. From predators and receive regular care from veterinarians, jaguars can live longer, often reaching 20 years or more. High in the treetops, the sloth enjoys a leisurely and patient existence. These creatures spend the majority of their lives among branches, descending to the forest floor only once a week to relieve themselves.
superstar usar, versus se subtitles to cut. Guest calendar. These arboreal mammals possess long, sturdy limbs and hooked claws that allow them to hang upside down from branches, a position in which they eat, sleep, and even give birth. Ecosystem in itself hosts symbiotic algae that camouflage the sloughs among the leaves, providing protection from predators. Sloughs are herbivores, primarily eating leaves, though they occasionally eat fruit and flowers, which they digest very slowly, sometimes taking a month to process a single meal. Slow digestion and low energy diet are why these creatures have such sedentary lives, moving only when absolutely necessary. Habitat fragmentation represents one of the greatest problems for sloughs, since it's decreasing their living space, making it harder for these relaxed animal populations to coexist. Although relatively sheltered behind the canopy, they represent a true feast for the harpy eagle. Impressive wingspan and piercing gaze, this powerful bird reigns as one of the most dominant aerial hunters in the rainforest. Harpy eagles breed slowly, usually raising just one chick every 2 to 3 years. The chick relies on its parents for up to 10 months, which naturally limits the growth of this already rare species population. Its sharp eyes scan for movement below. Not far beneath, the forest is alive with the distinct sounds of howler monkeys. This distinctive call, one of the loudest of any land animal, can be heard up to 3 miles away in the thick forest. Howler monkeys are an intriguing representation of nature's colour palette because of the wide variation in fur colour across different species that share the howler gene. Their fur can range from deep, shadowy black to a vibrant, fiery red, and the subtle browns with patches of golden colour help them blend seamlessly into the forest canopy. Their bodies stretching to about 2 to 3 feet in length, with tails just as long or longer, are well adapted for a life in the trees. These tails serve as a fifth leg, allowing the monkeys to confidently hold onto branches while they move through the high trees.
dominant hierarchy that influences access to food and mating. How monkeys showcase the social behavior typical for primates. Shifting the rainforest landscape from sound to sight, the vibrant toucan appears in the green background of the Amazon. This bird, known for its remarkably large and colourful bill, is more than just a visual marvel. It serves as a tool for reaching fruits on distant branches, allowing the toucan to access food sources that might otherwise be out of reach. These bills portray a bright palette of yellow, orange, red, green and blue. Toucans of different species reveal a variety of colours and patterns, serving several vital functions. It's used to send social signals, communicate, and make selection among them, while it also helps them control their body temperature in the hot and humid environments they call home. The plumage is generally black, with bright patches of white, red, yellow, and blue, helping them blend into the colourful fruits and flowers of their habitat. Yet it also makes them one of the most recognisable birds in the forest. These social birds, often seen in small flocks, maintain these formations for protection against predators. Stop! Before you buy this. This exact product could be cheaper on another store. And unless you compare price, the social structure allows them to interact through various calls and share information about food sources. Their ability to survive in the unpredictable conditions of the tropical rainforests depend on their communal lifestyle. The toucan leaps gracefully from branch to branch in search of fruits, playing a vital role in the life cycle of many plants. One such plant, hidden beneath the dense canopy, where sunlight struggles to penetrate, is the cacao tree. This moderately sized tree reaches heights of up to 25 feet. An ideal stature that allows it to flourish beneath the dense cover of taller neighbours. The tree produces fruits directly from its trunk. Known as cacao plants, they are large and roughly shaped, like elongated melons, boasting a range of colours, from yellow to deep purple. Houses a treasure trove of 20 to 60 seeds enveloped in a sweet pulpy matrix, a wildlife delight. They open the pods to eat the sweet pulp, but the cacao seeds themselves are bitter, so animals throw them away, renewing the forest understory with their growth. According to author and archaeologist Cameron L. McNeil, it was said that until 1737, a turkey was 100 cacao beans. This is because people in Mesoamerica used cacao beans as currency, as they held a value higher than gold or silver.
predators, or just to cool down. In their quiet, unassuming way, tapirs are key players in their environment, contributing significantly to the ecological balance of their tropical home. Higher up in the bustling treetops, a different kind of spectacle unfolds. Among the smallest and most agile of primates, marmosets jump energetically from branch to branch. These diminutive creatures are known for their striking features, including tufted ears and expressive faces. There are various species in the Amazon rainforest, each with their own distinct characteristics, perfectly suited to their specific environments. Marmosets have a complex social structure centered around family groups that typically consist of a dominant breeding pair and their offspring. The dominant female is usually the only one who breeds, giving birth to twins. Everyone in the group, including males and older siblings, equally cares for the young. Shared parenting approach helps ensure the survival of the young ones and provides valuable parenting skills to the older siblings. They communicate through a variety of chirps and calls, coordinated to find fruits, insects, and tree sap. Essential to the rainforest's ecosystem, marmosets play a crucial role in seed dispersal, improving the health and vitality of their tropical habitats. Treetops, we go to the understory below, where the vibrant heliconia stands out. With a unique floral architecture, these plants, sometimes known as lobsterclaws, thrive in moist, warm conditions under the forest canopy.
backdrop that accentuates the brilliance of its flowers. These blossoms range in colour from deep reds to bright yellows and oranges, designed to attract the eyes of pollinators. Hummingbirds in particular are drawn to these nectar-rich flowers, as their long beaks are perfectly adapted to reach the sweet reward hidden within. The life cycle of the heliconia contributes to the nutrient cycle of the rainforest, as the leaves and flowers of these plants eventually fall. They decompose and enrich the forest floor, sustaining the cycle of growth and renewal that defines these ecosystems. Away from the colour-splashed world of the heliconia, a master of stealth and strength silently patrols its territory. The cougar, also known as the mountain lion, has a powerful body that is built for hunting, with strong legs and a muscular build that enables it to take down prey much larger than itself. This feline is covered with a uniform tawny coat, allowing it to blend seamlessly into its surroundings. As a solitary hunter, the cougar is a master of stealth. It stalks its prey silently, using its keen senses of sight and hearing to locate potential meals. Very territorial, the mountain lion uses physical signs, such as scratch marks on trees, urine and feces, to communicate their presence to other cougars. As a generally silent and secretive animal, this majestic beast is often surrounded by mystery, avoiding human encounters. However, its presence is always felt as a symbol of the wild that lurks at the edges of our urban existence. A markups 3D creator. Have 2,000 plus customizable packaging templates and airlines with 3D markups. 80% time saving convenient. Get started quickly. One-click export. Online 3D model and bring your packaging to life. View your 3D design in real time. Start designing for free now. Silence of the forest floor, the macaw dominate the skies. Among the largest and most intelligent of all parrot species, there are about 18 different species recognized, each noted for its distinctive coloration and size. From the brilliant red and yellow of the scarlet macaw to the vibrant blue of the hyacinth macaw, these birds are a kaleidoscope of colour. Their feathers serve not only to attract mates, but also to camouflage them among the dense foliage of their forest homes.
display a remarkable level of commitment to their partners, unlike most other animals. Once they find a mate, they form a bond that lasts for the rest of their lives. They care for their young together, engage in mutual grooming, and can be seen flying so close to each other that it looks like they are connected. That can generate a force of up to 2,000 pounds per square inch, allowing them to crack open even the toughest nuts and seeds. Social birds, often living in flocks of up to 30 individuals, maintaining intricate social networks through various loud calls and squawks. These sounds can be extremely loud, but are essential for communication over long distances, warning of potential threats and establishing dominance hierarchies. Sadly, many macaw species are now threatened with extinction due to habitat loss, poaching, and the pet trade. Capturing them for sale as pets has dramatically reduced their numbers in the wild. Total contrast to the riotous colours painting the sky are the spider monkeys. Deeper into the heart of the rainforest, they swing from branch to branch with an effortless elegance. These agile primates bring a touch of vibrancy to the grim surroundings, showcasing a coat palette from deep blacks and browns to striking golds and whites. Spider monkeys belong to the Ytshorts group, which means imperfect in Greek, referring to the absence of thumbs. However, this apparent imperfection is a remarkable adaptation that provides them with exceptional grip and balance as they navigate the complex network of branches. They are capable of leaping impressive distances of up to 40 feet, using their powerful legs to propel themselves from one spot to another. You look scary.
generalknowledgequestionsinenglish. The dynamics of the groups they're leaving with are quite intriguing. They often split into small subgroups during the day to forage, reuniting in the evening to sleep together in trees. On the forest floor, the giant anteater moves at a slow pace. Its slow, deliberate movements and bushy tail starkly contrast with the lively treetop scenes above. This creature specializes in consuming ants and termites, using its 2-foot-long sticky tongue to devour up to 30,000 insects daily. With no teeth, it relies on the rough texture of its food and ingested dirt to grind down its meal. Although they lead a solitary life, the giant anteater plays a critical role in controlling insect populations and maintaining the ecological balance of their home. Is no ordinary ant. It's a giant among its kind. Known for delivering one of the most excruciating stings on the planet, these ants are formidable creatures. They reside in large colonies, sometimes housing thousands, all intricately working together to protect their queen and nurture their young. Unlike the tiny ants you might find marching through your garden, bullet ants can grow to about an inch long. They're not just big though, they're also adept climbers. With ease, they maneuver through the dense trees and underbrush of their forest homes. These ants are on a constant quest for food, mainly other insects and small invertebrates, which they skillfully capture using their strong mandibles. Amidst the green vegetation, the Guianan cock of the rock stands out with its bright orange plumage and a striking, fan-shaped crest that frames its face, offering a truly captivating spectacle. The Guianan is primarily frugivorous, feeding on a variety of fruits, occasionally including small snakes, lizards and insects to provide the necessary protein supplement. It is famous for its dramatic mating rituals, where males gather at communal sites called lakes to perform elaborate dances and vocal displays to attract females. However, when it comes to parental care, the male Guianan cock of the rock does not participate in nurturing the offspring, leaving
leaving the female to handle all aspects of raising them. Glass-winged butterfly, also known as Greta Otto, got its name for its almost magical, transparent wings, which help it blend effortlessly into its surroundings. What makes these wings transparent? It's all about the structure of the scales. Unlike other butterflies, whose scales contain pigments that reflect light, the glasswing scales are completely clear. This clever adaptation acts as a natural camouflage, shielding it from predators by rendering it nearly invisible against the leaves. Toolbox to convert, compress, edit videos, and much more. This remarkable passion flower boasts blossoms that are not only visually stunning, but also intricate. Each flower features 5 sepals and 5 petals, often in vibrant hues of purple, blue and white. At the center of the bloom, a ring of filaments, known as corolla, radiates outward, adding to the flower's dramatic appearance. These plants are not just ornamental, they've been used in traditional medicine for centuries. Native Americans and other indigenous peoples have utilized various parts of the plant to treat ailments such as anxiety, insomnia, and inflammation. Interestingly, Passiflora is also known for its fruit, passion fruit, which is truly a treat. These fruits come in various sizes and colours, filled inside with a juicy, seed-packed pulp that's both sweet and tangy. The passion fruit is a favourite not just among forest wildlife, but also among people who use it to brighten up everything, from fresh juices to decadent desserts. Passiflora vines are abundant, climbing up trees and spreading across the forest floor, overlapping with other territories where a diverse group of small primates thrives. The tamarins. These squirrel-sized monkeys, each weighing just over a pound, exhibit a remarkable variety of features and behaviors. One of the most notable is their facial hair. Many monkeys have distinctive mustaches or other facial markings, which vary significantly among species. Their fur is dense and soft, with colours ranging from subtle browns and greys to patterns of black, gold and white.
structure is fascinating. Often the group will rally to care for the young, protecting them from threats, ensuring the survival of the next generation in their natural habitat. The South American coati, a quirky and clever cousin of the raccoon. These creatures are known for their sharp wits and social nature. One standout feature of the coati is its impressive flexible snout. They put it to good use, sniffing out everything from sweet fruits buried under leaves to crunchy insects hidden in the bark. Their front paws are equipped with strong claws, making them natural excavators as they dig for grubs or flip rocks in search of a snack. What's truly intriguing is their nighttime routine. As dusk falls, coatis climb up to the safety of the treetops, where they craft makeshift nests. There, nestled among the branches, they spend the night tucked away from the world below. The green iguana, this large, arboreal lizard, is a true marvel of adaptation, perfectly suited to life on the treetops. Introducing the Redmi Note 17. It comes with a massive 8,000 milliamp hour battery with over 3 days of usage. A powerful Snapdragon processor. Redmi Note 17, the master of strength. Sporting a brilliant array of green scales that range from bright shade to deep earthy tones. This reptile can blend seamlessly into its vast surroundings. Unlike the tamarin monkeys, which rarely descend to the ground, the green iguana frequently ventures down to bask in the sun's warmth or to search for food. Sunbathing sessions are very important because they help the iguana keep its body temperature stable, as it relies on external heat sources to keep its body function steady. Branches overhanging rivers or streams, allowing them to quickly jump into the water if they need to, holding their breath for up to 30 minutes to escape danger. Unlike many reptiles,
Birds are primarily herbivorous. They mostly eat leaves, flowers, and fruits, which make up about 90% of their diet. The green iguana plays a vital role in the complex web of life in the Amazon rainforest. It is also popular in the pet trade, although it requires careful handling and special care to be well treated at home. Squirrel monkeys. These cute small animals thrive in the dense foliage and towering trees of the rainforest. They are omnivores, primarily indulging in a diet of fruits and insects, and occasionally they also snack on small vertebrates, such as lizards or bird eggs. Jaguars usually have a lifespan of 12 to 15 years when they're living in the wild. Their lives out there are shaped by the challenges they face, including territorial disputes that are for food and human threats like deforestation and poaching. On the other hand, in zoos where they're safe from predators and receive regular care from veterinarians, jaguars can live longer, often reaching 20 years or more. High nutrient ops, less self-injuries, aggression, and patient existence. These creatures spend the majority of their lives on branches, descending to the forest floor only once a week to relieve themselves. These are warrior mammals, possessing long, sturdy limbs and hooked claws that allow them to hang upside down from branches, a position in which they eat, sleep, and even give birth. Therefore, a complex ecosystem itself hosts innovative algae that camouflage their sloughs under the leaves, providing protection from predators. Sloughs are herbivores, primarily eating leaves. They occasionally eat fruit and flowers, which they digest very slowly, sometimes taking a month to process a single meal. This slow digestion and low energy diet why these creatures have such sedentary lives, moving only when absolutely necessary. Habitat fragmentation represents one of the greatest problems for sloughs, since it's decreasing the living space, making it harder for these relaxed animal populations to coexist. Although relatively sheltered behind camping,
its impressive wingspan and piercing gaze, this powerful bird reigns as one of the most dominant aerial hunters in the rainforest. Hardy eagles breed slowly, usually raising just one chick every 2 to 3 years. The chick relies on its parents for up to 10 months, which naturally limits the growth of this already rare species population. Its sharp eyes scan for movement below. More far beneath, the forest is alive with the distinct sounds of howler monkeys. This distinctive call, one of the loudest of any land animal, can be heard up to 3 miles away in the thick forest.
troops that can number from a handful to over a dozen, including males, females, and offspring, with a dominant hierarchy that influences access to food and mating. How monkeys showcase a social behavior typical for primates. Shifting the rainforest landscape from sound to sight, the violent toucan appears in the green background of the Amazon. This bird, known for its remarkably large and colourful bill, is more than just a visual marvel. It serves as a tool for reaching fruits on distant branches, allowing the toucan to access food sources that would otherwise be out of reach. These bills portray a bright palette of yellow, orange, red, green, and blue. Toucans of different species reveal a variety of colours and patterns, serving several vital functions. It's used to send social signals, communicate, and make selection number, while it also helps them control their body temperature in the hot and humid environments they call home. Their plumage is generally black with bright patches of white, red, yellow, and blue, helping them blend into the colourful fruits and flowers of their habitat. Yet it also makes them one of the most recognizable birds in the forest. These social birds, often seen in small flocks, maintain these formations for protection against predators. The social structure allows them to interact through various calls and share information about food sources. Their ability to survive in the unpredictable conditions of the tropical rainforests depend on their communal lifestyle. The toucan leaps gracefully from branch to branch in search of fruits, playing a vital role in the life cycle of many plants. One such plant, hidden beneath the dense canopy, where sunlight struggles to penetrate, is the cacao tree. This moderately sized tree reaches heights of up to 25 feet, an ideal stature that allows it to flourish beneath the dense cover of taller neighbours. The tree produces fruits directly from its trunk. Known as cacao plants, they are large and roughly shaped, like elongated melons, boasting a range of colours, from yellow to deep purple.
ですが最近的にテーマ系的ビータイムです世界の直径と大発データが頂点 contributing significantly to the ecological balance of that tropical island. Higher up in the bustling treetops, a different kind of spectacle unfolds. Among the smallest and most agile of primates, Mars ants jump energetically from branch to branch. These diminutive creatures are known for their striking features, including tufted ears and expressive faces. There are various species in the Amazon rainforest, each with their own distinct characteristics, perfectly suited to their specific environments. Monarchs have a complex social structure centered around family groups that typically consist of a woman, breeding pair, and their offspring. The dominant female is usually the only one who breeds, giving birth to twins. Everyone in the group, including males and older siblings, equally cares for the young. This shared parenting approach helps ensure the survival of the young ones and provides valuable parenting skills to the older siblings. They communicate through a variety of chirps and calls, all related to find fruits, insects, and tree sap. Essential to the rainforest ecosystem, monarchs play a crucial role in seed dispersal, improving the health and vitality of their tropical habitat.
the brilliance of its flowers. These blossoms range in colour from deep reds to bright yellows and oranges, designed to attract the eyes of pollinators. Deeply powered by AI, the more 15 understands and interprets, dissolving the space between thought and action. When creativity and AI merge, every gap is gracefully bridged. With AI extend, those almost moments find perfect continuation. The shot keeps flying, and the energy never breaks. You stay in motion, and AI ensures every frame aligns with your vision. This is Wondershare Filmora, powered by AI, and as an expert. Hummingbirds in particular are drawn to these nectar-rich flowers, as their long beaks are perfectly adapted to reach the surrounding world hidden within. The life cycle of the heliconia contributes to the nutrient cycle of the rainforest, as the leaves and flowers of these plants eventually fall. They decompose and enrich the forest floor, sustaining the cycle of growth and renewal that defines these ecosystems. Away from the colour-splashed world of the heliconia, a monster of stealth and strength silently patrols its territory. The cougar, also known as the mountain lion, has a powerful body that is built for hunting. With strong legs and muscular build, it enables it to take down prey much larger than itself. This feline is covered with a uniform tawny coat, allowing it to blend seamlessly into its surroundings. As a solitary hunter, the cougar is a master of stealth. He stalks its prey silently, using his keen senses of sight and hearing to locate potential meals. Very territorial, the mountain lion uses physical signs such as scratch marks on trees, urine and feces to communicate their presence to other cougars. As a generally silent and secretive animal, this majestic beast is often surrounded by mystery, avoiding human encounters. However, its presence is always felt as a symbol of the wild that lurks at the edges of our urban existence. Far from the solemn silence of the forest floor, more claws
18 different species recognized, each noted for its distinctive coloration and size. From the brilliant red and yellow of the scarlet macaw to the vibrant blue of the hyacinth macaw, these birds are a kaleidoscope of color. Their feathers serve not only to attract mates, but also to camouflage them among the dense foliage of their forest homes. Fascinating twist. These parrots display a remarkable level of commitment to their partners, unlike most other animals. Once they find a mate, they form a bond that lasts for the rest of their lives. They care for their young together, engage in mutual grooming, and can be seen flying so close to each other that it looks like they are connected. Macaws have powerful beaks that can generate a force of up to 2,000 pounds per square inch, allowing them to crack open even the toughest nuts and seeds. Social birds, often living in flocks of up to 30 individuals, maintaining intricate social networks through various loud calls and squawks. These sounds can be extremely loud, but are essential for communication over long distances, warning of potential threats, and establishing dominance hierarchies. Have 2,000 plus customizable packaging templates and airlines with 3D markups. 80% aren't saving you need none. Get started quickly. One-click export. Online 3D model bring your packaging to life. View your 3D design in real time. Start designing for free now. Sadly, many macaw species are now threatened with extinction due to habitat loss, poaching, and the pet trade. Capturing them for sale as pets has dramatically reduced their numbers in the wild. In total contrast to the riotous colours painting sky,
spider monkeys. Deeper into the heart of the rainforest, they swing from branch to branch with an effortless elegance. These agile brains bring a touch of vibrancy to the green surroundings, showcasing a coat palette from deep blacks and browns to striking golds and whites. Spider monkeys belong to the task group, which means imperfect in Greek, referring to the absence of thumbs. However, this apparent imperfection is a remarkable adaptation that provides them with exceptional grip and balance as they navigate the complex network of branches. They're capable of leaping impressive distances of up to 40 feet, using their powerful legs to propel themselves from one spot to another. The dynamics of the groups they're leaving with are quite intriguing. They're often split into small subgroups during the day to forage, reuniting in the evening to sleep together in trees. On the forest floor, the giant anteater moves at a soaring pace. Its slow, deliberate movements and bushy tail starkly contrast with the lively treetop scenes above. This creature specializes in consuming ants and termites, using its 2-foot-long sticky tongue to devour up to 30,000 insects daily. With no teeth, it relies on the rough texture of its food and ingested dirt to grind down its meal. Although they lead a solitary life, the giant anteater plays a critical role in controlling insect populations and maintaining the ecological balance of their home. Is no ordinary ant. It's a giant among its kind. Known for delivering one of the most excruciating stings on the planet, these ants are formidable creatures. They reside in large colonies, sometimes housing thousands, all intricately working together to protect their queen and nurture their young. Unlike the tiny ants you might find marching through your garden, bird ants can grow to about an inch long. They're not just big though, they're also adept climbers. With ease, they move through the dense trees and underbrush of their forest homes.
constant quest for food, mainly other insects and small invertebrates, which they skillfully capture using their strong mandibles. Beneath the green vegetation, the green cock of the rock stands out with its bright orange plumage. The striking, fan-shaped crest that frames its face, offering a truly captivating spectacle. The green is primarily frugivorous, feeding on a variety of fruits, occasionally including small snakes, lizards, and insects to provide the necessary protein supplement. It is famous for its dramatic mating rituals, and males gather at communal sites or lakes to perform elaborate dances and vocal displays to attract females. However, when it comes to parental care, the male Oriental cockroach does not participate in nurturing the offspring, leaving the female to handle all aspects of raising them. Also known as Greta Otto, was known for its almost magical, transparent wings, which help it blend effortlessly into its surroundings. What makes these wings transparent? It's all about the structure of their scales. Unlike other butterflies, whose scales contain pigments that reflect light, the glasswing scales are completely clear. This clever adaptation acts as a natural camouflage, shielding it from predators by rendering it nearly invisible against the leaves. The passiflora. This remarkable passion flower boasts blossoms that are not only visually stunning, but also intricate. Each flower features 5 sepals and 5 petals, offering vibrant hues of purple, blue, and white. At the center of the ring, a ring of thorns, known as corolla, radiates outward, adding to the flower's dramatic appearance. These plants are not just ornamental, they've been used in traditional medicine for centuries. Native Americans and other indigenous peoples have utilized various plants and plants to treat ailments such as anxiety, insomnia, and inflammation. Interestingly, passiflora is also known for its fruit, passion fruit, which is truly a treat. These fruits come in various sizes and colors, filled inside with a juicy, seed-packed pulp that's both sweet and tangy. The passion fruit is a favorite not just among forest wildlife, but also among people who use it to brighten up everything, from fresh juices to decadent desserts. Passiflora vines are abundant, climbing up trees and spreading across the forest floor, overlapping with other territories,
pounds. And these squirrel-sized monkeys, each weighing just over a pound, exhibit a remarkable variety of features and behaviors. One of the most notable is their facial hair. Many monkeys have distinctive mustaches or other facial markings, which vary significantly among species. Their fur is dense and soft, with colours ranging from subtle browns and greys to patterns of black, gold and white. Their unique coat provides camouflage, but is also being used as an attractive element during interactions with others in mating. Their social structure is fascinating. Often a group will rally to care for the young, protecting them from threats, ensuring survival of their next generation in their natural habitat. The South American coyote, a quirky and clever cousin of the raccoon. These creatures are known for their sharp wits and social nature. One standout feature of the coyote is its impressive flexible snout. Their ability to use, sniffing out everything from sweet fruits found on leaves to crunchy insects hidden in the bark. Front paws are equipped with strong claws, making them natural excavators as they dig for grubs or flip rocks in search of a snack. What's truly intriguing is their nighttime routine. As dusk falls, coyotes climb up to the safety of the treetops where they craft makeshift nests. There, nestled among branches, they spend the night tucked away from the world below. This large, arboreal lizard is a true marvel of adaptation, perfectly suited to life on the treetops. Sporting a brilliant array of green scales that range from bright jade to deep earthy tones, this reptile can blend seamlessly into its verdant surroundings. Unlike the towering monkeys, which rarely ascend to the ground, the green iguana frequently ventures down to bask in the sun's warmth
or to search for food. These sunbathing sessions are very important because they help the iguana keep its body temperature stable as it relies on external heat sources to keep its body function steady. And hanging rivers or streams, allowing them to quickly jump into the water if they need to, holding their breath for up to 13 minutes to escape danger. Unlike non-reptiles, green iguanas are primarily herbivorous. They eat mostly leaves, flowers and fruits, which make up about 90% of their diet. The green iguana plays a vital role in the complex web of life in the Amazon rainforest. It is also important in the hair trade, although it requires careful handling and special care to be well treated at home. Squirrel monkeys. These cute small animals thrive in the dense foliage and towering trees of the rainforest. They are omnivores, primarily indulging in a diet of fruits and insects, and occasionally they also snack on small vertebrates such as lizards or bird eggs. This paper's a lot of things that are between you and break, and I need to crush it. Oh, and our first show is tonight. Luckily, Grammy has got my back, making my process way faster and my writing way better. Perfect. Much bolder. Get it? The bold as a rocks. What time's our show? Interesting fact about these monkeys is their complex social life. They gather in large groups. They can include both males and females, sometimes numbering up to 500 members. Despite their large numbers, there's a clear structure to their community. The females are the heart of the group, creating a well-defined hierarchy, while males often stay more in the sunlight. However, during mating season, males experience a significant change, bulking up by as much as 20% in body weight to better attract mates. Squirrel monkeys are fascinating for many reasons. The one standout feature is their brain-to-body mass ratio, the highest of all primates. This remarkable
autistic is thought to boost their intelligence and problem-solving skills, positioning them among the smartest primates in the world. Take a look at our trees. We encounter the larvae, an adept acrobat on the treetops. Adorned in a striking coat, white with dark recess on golden brown background, the larvae excels in staying hidden. What really distinguishes the larvae is its extraordinary agility. This cat has a unique trait that is not found in any other feline. It can rotate its ankles before 180 degrees, enabling it to scamper down trees head first, much like a squirrel. Though rarely spotted by humans, the larvae is an aggressive hunter. It targets a range of small mammals, birds, and reptiles, both along the branches and on the forest floor. Remarkably, this clever cat has also been known to mimic the calls of baby. Nevertheless, life in the forest holds its own set of challenges. The larvae's numbers have fallen due to habitat destruction and fragmentation resulting from deforestation. What really makes these butterflies stand out are its unique wing patterns, woven just like our lives. This clever trick can make a predator hesitate before making a move. One of the most amazing things about the owl butterfly is how well it can hear. Even though they don't have visible ears, these butterflies have tiny, specialized organs called vocal organs right at the base of their wings. These organs can pick sound frequencies as high as 20,000 hertz, which is well beyond what we humans can hear. Nothing in the Amazon can hide from the keen eyes of a spectacled owl.
same time, maintaining balance that's essential for the forest's health. It's a living ecosystem. Perhaps the most intriguing fact about the Amazon River is its ability to shape the global climate system. The river pumps a huge amount of water into the Atlantic Ocean, changing ocean currents, weather patterns, and even the global temperature. Long ago, between 65 and 145 million years ago, the Amazon River flowed in the opposite direction it does today. Back then, the area along the river now meets the Atlantic was actually a highland, which helped direct its course westward. The landscape changed as the Andes Mountains began to rise dramatically in the west, reshaping the terrain. This monumental geological shift forced the Amazon to carve a new path, reversing its flow to the east toward the Atlantic Ocean, forming the river system we know today. Holds the title of being the world's largest rodent. These adorable giants thrive in a semi-aquatic environment, with stocky bodies covered in coarse, reddish-brown hair, and distinctive traits such as gently rounded heads and small ears and eyes. These rodents are herbivores, with a varied diet that includes aquatic plants, grasses, and fruits. And according to recent studies, their diet may include up to 89 distinct plant species. In addition, they have a particular digestive system that allows them to efficiently ingest fibrous plants. They practice synchotrophy, a habit in which they swallow their own feces to obtain additional nutrients. With partially red feet and the ability to hold their breath in the water for up to 5 minutes, they are good swimmers, frequently entering the water to avoid predators, cool off, or search for food. Scientists have found that capybaras can live peacefully with many other species, such as birds, turtles, and even snakes. Hence, the useful and affectionate nature of capybaras has made them popular as unusual pets. But you should think about their specific needs before getting one as a pet.
This is the poison dart frog, a tiny, cute amphibian with an extraordinary defense mechanism. अरे भाई हमारा देखो ए न्यू एक्सेस को विद एयर चंडी एआई माने एयर इनसाइड इनोवेटिव एडवांस फैब्रिक्स दिया क्या हुआ पकड़ो एकदम भूता गया एयर इनसाइड ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ତ କମ୍ଫର୍ଟ ଅଛି एक्सेस को Measuring only around 1.6 to 2 inches in length, these frogs may seem harmless, but their brightly coloured skin sends a clear warning to potential predators. The poison dart frog's vibrant hues, yellows, oranges, reds, greens and blues, are not merely for show. They serve as a visual alarm, a phenomenon known as aposematic coloration. The more vivid the frog's coloration, the more potent its toxins are. Some species, like the golden poison dart frog, carry enough poison in their skin to kill up to 20,000 mice, or even 10 grown men. Poison dart frogs, though often feared for their toxicity, lead incredibly intriguing lives. Their reproduction process is particularly fascinating. Female frogs lay their eggs on foliage, deliberately choosing locations away from water. As the young tadpoles grow, they begin exploring transformation. Remarkably, they start producing toxins in their skin at this very early stage. Over several weeks, these tadpoles spread legs, their tails gradually disappear, and they finally emerge as tiny froglets. Once more, poison dart frogs raised in captivity don't become as toxic as their wild relatives. These difference in toxicity levels is tied to their diet in the wild, where they derive their potent poisons. Butterfly, named after the green blue malachite. It flaunts its wings, the these gemstones green and white bands. The adults savor a diet rich in nectar, while the caterpillars feed on the leaves of Ammonia glabra, or the pond apple tree. The most astounding feature is perhaps their longevity. In the butterfly world, where many species live for only a few weeks, malachite stand out by potentially living up to several months. This extended lifespan allows them to perform multiple reproductive cycles within their lifetime, inheriting their kin. Sceince is a remarkable bird that thrives in the swamps, mangroves, and the flats of our rainforests.
These birds love company, often gathering flocks of 30 or more, and are incredibly communal, with mating pairs sometimes building their nests side by side, even in the same tree. In certain areas, you won't find a single colony, bustling with hundreds or even thousands of these nests. What sets these birds apart is their colourful diet. It feasts on a mix of crustaceans, mollusks, insects, and small fish. It is this carotenoid-rich diet that turns their feathers a stunning shade of red. Without these pigments, their plumage will take on a paler pink, or even a white colour. Using its long curved bill, the scarlet ibis digs through mud and shallow waters in search of food. It allows more touch and sight to find its way. Another fascinating aspect of the scarlet ibis is its ancient heritage. Fossils reveal that this species has existed for 60 million years, making it one of the oldest bird species still soaring through our skies today. Tastes so rich, so intense. It's best enjoyed like this. You can rush someone using the candles and whatnot. Don't rush it. The eyelash viral is captivating for its unusual scales above the eyes, shaped strikingly like eyelashes, which is how it got its name. These scales do more than just look interesting. They cleverly camouflage the snake within the lush foliage, making it virtually invisible as it waits for prey. A true specialist in surprise attacks, the eyelash viper is incredibly patient, staying motionless, and blending seamlessly with its environment until the right moment. Small rodents, frogs, lizards, and birds. When that suspected animal comes just close enough, the viper strikes with astonishing speed, injecting a lethal dose of venom in an instant. This venom is no ordinary bite. It's designed to quickly incapacitate the viper's prey, causing significant tissue damage and disrupting vital bodily functions. While the eyelash viper typically avoids human interaction, accidental encounters can be extremely serious and require urgent medical care. So it's better to stay away from them. Also known as Victoria Amazonka, thrives in the tranquil rivers, ponds, and floodplains of the Amazon. Victoria Amazonka is renowned for its massive leaves, spanning up to 10 feet across. The vast circular pouch
worse are how closely stalks submerged up to 26 feet deep, rooting firmly in the riverbed's mud. Far from delicate, the undersides of the leaves are fortified with a sturdy network of ribs and supports, enabling them to hold up a substantial amount of weight. Remarkably, these buoyant leaves can support as much as 176 pounds, roughly the weight of a small adult. Butterfly. Its wings are a striking blue that doesn't just catch your eye, they're key to its survival. These bright wings help attract pollinators, and they also protect it from predators by quickly switching to a camouflage brown underside when closed. The diet of the blue morpho butterfly is quite varied. While it is called knowledge that butterflies consume nectar, this peculiar specimen chooses more unusual options. It delights in the juices of rotten fruits, enjoys the sap from trees, and occasionally indulges in nutrient-rich mud along riverbanks. Swims a remarkable giant, the pigeon, also known as an Arapema gigas. This enormous fish can grow up to 15 feet long and tip the scales around 440 pounds, making it one of the largest freshwater fish in the world. The is truly unique in its ability to breathe air through a like swim bladder, a rare trait that lets it thrive in the low oxygen waters of the Amazon's floodplains. Creature that glides through the Amazon rainforest rivers is the giant otter. It can stretch up to 6 feet in length and tip the scales at 75 pounds, making it the largest member of the weasel family and a formidable predator in its habitat. Otters form tight-knit family units of up to 20 members, consisting of a bonded pair and lay young for several breeding seasons. These groups claim stretches of riverbank where they build bends and campsites close to excellent fishing locations. Interact calmly and are fiercely protective of their territory against any interlopers. These otters are exceptionally adapted to life in water and feature long-leg feet, water-resistant fur, closable ears, and nose that block out water when they dive. Their elongated bodies and muscular tails enable them to swim swiftly and deftly, catching a wide range of fish, which forms the bulk of their diet. A giant otter can consume up to 9 pounds of fish each day.
clashes with local fishermen and compete over the same resources. Sometimes otters become entangled in fishing nets or harmed by those who view them as competition. Turtles are a fascinating group of reptiles that intrigue both naturalists and turtle lovers. Instead of pulling their heads straight back, these unique turtles fold their long legs sideways under the wing of their upper shell. This remarkable feature not only sets them apart from other turtle species, but also serves as a defense mechanism against predators. They mostly eat insects and other small invertebrates, but they aren't big eaters. They'll also snack on fish, worms, and sometimes carrion. This unique behavior and striking appearance will make them a popular sighting for eco-tourists exploring the Amazon rainforest. Snakes. Remarkables are semi-aquatic and have adapted brilliantly to live in water. Their eyes and nostrils set high on their heads, allowing them to stay almost completely submerged while still being able to see and breathe. Incredibly adept swimmers, these snakes can move through water at speeds of up to 10 miles per hour, much quicker than their slow movements on land. Despite their daunting size, green anacondas are not venomous. Instead, they use their massive muscular strength as constrictors, pulling around their prey to suffocate it. Gazing up at the sky, we notice something remarkable. The king vulture, a splendid scavenger, plays a vital role in keeping ecosystems healthy. Interestingly, the king vulture sponsors meals from high above. Unlike his relatives who sniff out dinner, this one relies on sharp vision to see where other vultures gather, signaling a feast below. To 500 feet in the air, it watches patiently before diving down to claim its portion. At the carcass, the king vulture's
protective figure in its habitat. Beneath the canopy of the forest, we might stumble upon a curious inhabitant that has long captivated our imagination. Meet the glassfrog, known for its nearly transparent skin, which provides a rare window into its internal anatomy. One of the most fascinating aspects of the glassfrog is its near invisibility. But this transparency isn't just for show. When these frogs relax, they can shuttle almost all of their blood cells to storage areas within the liver. This incredible ability boosts their transparency by up to 60%, making them nearly invisible to predators. Of light-reflecting crystals on its scored sacs further enhances their stealth, securing the glassfrog's reputation as a master of disguise. Yet the most spellbinding trait of the glassfrog is its visible height. Watching these extraordinary animals, you can see their tiny hearts pulsating through their skin, a trait that distinguishes them from other amphibians. The Amazonian manatees, found solely in the freshwater expanses of the Amazon River basin, spend up to 7 hours each day grazing on a diverse mix of aquatic plants. Impressively, they consume 10 to 15% of the body weight in vegetation daily, which for larger individuals means they're adding over 200 pounds of grains. Their hearty appetite, however, is just one of many intriguing characteristics. Related to elephants, with whom they share an ancient ancestor, manatees have evolved distinct traits suited for aquatic life. They can adjust their salt balance, which enables them to inhabit both freshwater and saltwater environments seamlessly. Continuous tooth replacement. Unlike humans, who have just 2 sets of teeth over their lifetime, manatees perpetually grow new molars at the back of their mouths to replace those that wear out. This constant renewal is vital, given that their diet often includes sand and grit, which wear out teeth. Spotted dark, scaly skin that shimmers from charcoal to deep black, excels at hiding in plain sight. These can be more versatile predators, dying on an array of prey like fish, birds,
vision, smell, and hearing giving edge, particularly in the dark, making them formidable hunters compared to many other creatures. Of the Amazon River will follow the red-bellied piranha. Despite their famous reputation of friends, these fish are far from monsters, but often made out to be. With their eye-catching reddish bellies and gleaming silver scales, piranhas are actually opportunistic omnivores. They feed on a variety of food sources, ranging from insects and crustaceans to fruit and seeds. Interestingly, red-bellied piranhas are quite social. Instead of burrowing in waters above, they fly straight for members, moving in groups to safeguard against threats in their complex river habitat. One of the most striking traits is their dental architecture. The red-bellied piranha has a set of sharp, perfectly meshed teeth, giving them one of the most powerful bites in the animal kingdom. The title of the world's largest freshwater archipelago, covering over 230 square miles, home to more than 400 islands. Each island serves as a distinct ecosystem, relying on a rich variety of plants and animals. The story of the creation of the Amazon's archipelago captures the remarkable craft of nature. For countless years, the rainforest dynamic movements have carved out its path through the lush rainforest. As the river meandered and altered its course, it sculpted a complex network of waterways and islands, each showing the constant influence of water over time. This phenomenon is due to their differences in temperature, speed, and water density. Flowing from the Colombian highlands, the Rio Negro, the largest tributary of the Amazon, carries cool, almost black water. In sharp contrast, the Amazon River, fed by saline rich runoff from the Andes Mountains, flows with warm, salmon-colored waters. Stretching for over 6 miles, these two rivers run parallel, creating a dramatic visual of dark water alongside lighter water, a natural spectacle that captivates anyone who sees it. Known for its unmatched natural wealth, the Amazon faces multiple challenges that can jeopardize its very existence. One of the most pressing threats to the Amazon rainforest is deforestation, driven primarily by agriculture, logging, and infrastructure development. It strips the land of the trees essential for carbon storage.
pristine forests are cleared, destroying the habitat of countless species, pushing many of them towards extinction. In addition to deforestation, mining comprehends the rainforest's plight. The search for gold and other valuable resources leads to a surge in rural populations that represent the habitat destruction. Mercury used in gold extraction contaminates rivers and soil, affecting both aquatic life and human populations. Fire set intention to clear the land for agriculture. It can quickly spiral out of control, consuming vast areas of forest in flames. These fires aren't just local disasters, they emit vast quantities of carbon dioxide, contributing significantly to global warming. The smoke from these fires can impact regions far beyond the Amazon, impacting air quality and public health on a massive scale. Before purifying the land with flames, the illegal wildlife trade happens, with millions of exotic species highly prized on the black market. This illicit activity not only depletes local populations, but also disrupts the ecological balance, with predators and prey alike being removed from the ecosystem. Rising temperatures, altered rainfall patterns, and more frequent extreme weather events pose a direct risk to the health and resilience of the forest. Amid these dire challenges, there is still hope for the Amazon rainforest. It is generating approximately 20% of the world's oxygen. It's a living, breathing entity that sustains life on a global scale. A treasure worth protecting. This is the Amazon. Natural wonders of this planet, check out this video. नमस्कार भाई, राम राम। सबसे पहले फटाफट कमेंट करके ये बता दीजिए कि आपको मेरी ऑडियो और वीडियो प्रॉपरली सुनाई आ रही है या नहीं आ रही।
दूसरी चीज दोस्तों, मैं इस वीडियो के शुरू में ही एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं एक माइक्रो सेकेंड भी वेस्ट करने वाला नहीं हूँ। आप इस वीडियो में सीखने आए हैं और कुछ ऐसा सीखने आए हैं जिससे जब ये वीडियो खत्म होगी उसके बाद आपका जीवन बदल सकता है। एआई में ना बहुत कुछ नया 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 आता ही जा रहा है, लेकिन जो उसको बिल्कुल फटाफट कैप्चर कर लेगा ना और एक बड़े स्केल पर उसको इम्प्लीमेंट कर देगा, वो बहुत बेहतर अवस्था में आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। मैंने लिखा 10 दिन में होंगे आपके 0 से 50,000 सब्सक्राइबर। ये मजाक नहीं है, ये एआई। यदि आपको स्किल्स अच्छे से आती है, यूटिलाइजेशन अच्छे से आता है, तो आप जो वीडियो एडिटिंग की दुनिया है या वीडियो जनरेशन की दुनिया है, आज की डेट में जो कंटेंट है लोग वीडियो की फॉर्म में ही देखते हैं, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो कार्टून हो, चाहे वो फेसलेस वीडियो हो, चाहे वो फेस वाली वीडियो हो, चाहे वो क्लोन हो। दोस्तों, आज मैं आपकी पूरी समस्या खत्म करने वाला हूँ। आप मुझे अगले 60, 70, 80, 90 मिनट जितने भी है शांति से दीजिए, क्योंकि ये वीडियो 1 सेकेंड भी आपका वेस्ट नहीं होने देगी, ये मेरी गारंटी है। और सारा काम प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। उसके बाद बिल्कुल क्लास के अंतिम पड़ाव में आपके सारे क्वेश्चंस का उत्तर भी दूंगा कि फ्री में कैसे यूज करें, या जो आपको प्रॉम्प्ट है वो कहाँ मिलेगा, या और चीजें कहाँ कैसे मिलेगी, ये सब कुछ मैं अंत में बताने वाला हूँ। मैं बीच में आपका कोई भी कमेंट देने वाला नहीं हूँ। इस बात को आप बिल्कुल अच्छे से समझिए, यदि आप प्रैक्टिकली चाहते हैं कि आप कुछ बहुत अच्छा सीखें। ठीक है, तो इतनी बात यदि आपको समझ में आ गई है तो हमें शुरू करना चाहिए। और इस वीडियो के मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मेरी स्क्रीन नजर आएगी, मैं साइड में कोने में बैठा हुआ नजर आऊंगा आपको, और आपको है जो वो मेरी पूरी की पूरी स्क्रीन नजर आएगी। इस बात को आप सभी को ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो चलिए अब सबसे पहले मैं आपको कुछ वीडियोस दिखा रहा हूँ जिनको बनाने में 5-5, 10-10, 20-20 मिनट ही लगेंगे। और उसके बाद में शुरुआत से आपको बताऊंगा कि पहला स्टेप आपको क्या लेना है, स्क्रिप्ट कैसे लिखवानी है, और उससे सीधी वीडियो कैसे बनेगी और वीडियो जोड़नी कैसे है, मतलब हर चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कुछ 4-5 ऐसी वीडियो दिखाता हूँ आपको, छोटी छोटी है, लंबी नहीं है। आप उन वीडियो को देखिए और महसूस कीजिए कि यार ये क्या हो रहा है, क्योंकि ये सब चमत्कार है जो ये 5, 10, 15, 20 मिनट में बनी हुई वीडियो है, जिसके लिए पहले वीडियो एडिटर आपसे बहुत पैसा ले लेते थे और 7-7, 10-10 दिन का टाइम ले लेते थे। तो आइए हम शुरू करते हैं और बिल्कुल अच्छे से एक एक चीज देखते हैं। स्क्रीन आपकी कनेक्ट रहेगी, मेरा चेहरा देखने की ज्यादा कोशिश इस सेशन में मत करना। ठीक है, चलिए आवाज वगैरह सब आ रही है सही से? चलिए, मैं मेरी टीम से भी कहना चाहता हूँ यदि वो सुन रहे हैं तो मुझे एक बार कंफर्म कर दें सब प्रॉपर चल रहे हैं अभी। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ वीडियो दिखा रहा हूं और यहाँ पर आप सबसे पहले वो वीडियो देखेंगे। अभी आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी, बस 1 मिनट का समय लगेगा मुझे। प्रैक्टिकल काम करके दिखाएंगे तो यहाँ पर आपको टाइम लगाना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले आप ये वाली वीडियो देखेंगे। मैं इसको रोक रहा हूँ एक बार और प्रॉपरली एक एक चीज आपके लिए सेट कर रहा हूँ। देखिए,
the pioneering series Mutual Funds के हमारा David, none other than Sunil Singhani. Again, thank you for being here. Over the past 3 decades, he's earned a stellar reputation in the market as being one of the finest investment minds and has been a star fund manager at Reliance, now a founder at Happiness Asset Management. And I look forward to talking about the markets and having some rapid fire questions for him. And hopefully our audience can take out some real gems of investing starting their mutual funds. So, thank you, Sunil. Thanks for having me. I just have a few questions to get straight to it. So one, Sunil, Abacus Mutual Fund is a big fund house, but you are clearly not in the market. For a retail investor starting with a 5,000 rupees SIP, why should they trust you? So, again, thanks a lot for having me. You always say that you are moving out with the Quizo experience. And earlier, with the investment of almost 16 years, Abacus has been in existence since 2018. With the key products that are again listed in the focus. And I think it is a natural extension of what we believe we are good at and what our passion as well as our expertise like, which is investment into listed equity space. And that's the reason we finally took the plunge of launching into it. So I think from an investor's perspective, equity investing is all over the future. It's not over the past. And we should invest if we believe that we have a great economy for the future. We should invest in I would say, asset managers as well as different fund classes that we believe that future is going to be good. So that was a yes positive from my side. You are widely known for a small cap track record. And when Abacus launches its flexi cap, its first scheme is a flexi cap fund. What is the message to the investors? No, I think, yes, we are known to be stock pickers because we do a lot of research in-house. But it's not that we only investors. I think over the last 3 decades, we have seen good performances across sizes of it. Because investing, whether it is in large or small, is actually the same. You are investing in businesses, you are taking a call on management, you are doing the studying, you are very balanced focus, so very balanced across whether it is large or small. And the reason we are moving into foreign is small because we have in our research, we are bold to take calls in stocks which not many people cover. That's why we have that. I think FlexiCap was a good start on the equity side. It gives us a lot of flexibility because we can take calls across market caps. And I think it was very logical for us given the dynamic nature of the market and particularly what has happened over the last 6 to 12 months in terms of various segments to have flexibility. I think that is what we have done. Now, FlexiCap, we have been a little bit different. A lot of FlexiCaps have immediately been after because they're 90-95% of their exposure after. Our FlexiCap, we want to run it over 2%. I think that has been what we want to do. After that, we have launched a small portfolio. So we will be in that and we are limits of the first is around. So do you think that it's for first time investors going directly towards like a small cap fund versus a flexi cap? What in your opinion would be a better approach? So, for an investor, obviously every investor will be very I would always say that India is a good country. India is a very and we always say that the first $1 trillion of our economy was contributed by getting 4 ways. Like steel, cement, textile, tea, if you see the Sceince 30-40 years back, they were very, very good. The second $1 trillion to 4 trillion, you have the private banks, the convention, the IT services. I think 4 to 8 will be a really new sector. Obviously, some of the old sectors like banks and all they also want to. But a lot of new companies, they are now moving to consumption. We want capital market trade, we want asset management trade, we want niche products, we want niche consumer products. And I think all of these will be in the new market. I think as the economy changes, we have to be very clear that we are also participating in that. And those companies
funds are built on process, not personality. So what are investors really getting? I think we also keep on thinking about it. But very funnily, I tell you, when I started the practicing people, when you go to some mall or with a flag, people recognize people who are great, for so long, India and all. They first to South and East. I think now they're practicing. So over the last 8-9 years, we have been able to create a little bit of, I would say, brand equality for our practice. Now, just to give you this, we have 6.9 across 57 for very small private also. So it's not only obviously there's need for so long, but that is to also happen when people relax, they all about particular aspect. So that always happens. We need to take some of the other well-known parts, for retail, to go to champagne and price, to support, and so on. So to identify the fund but ultimately we have and we have a very, very clear process. We have a clear investment philosophy and we have which is absolutely clearly followed. So I think we have to be thinking further team on the research. So we back to and now with this AI we can do this scope of 6 million people. So it's a whole machinery which is there. So every quarter, many retail investors look at public portfolio disclosures and try to copy successful investors. You have probably seen your own portfolio copied many times. What is your opinion? Is it good or dangerous? And it is black or white. See, I think investors get confidence when I would say investors who are known to the stock market, they invest in companies. And rightly so, because they do believe that with some well-known investors and they can get the research to do it. However, one has to also look at the ability of taking risk, the ability of investor. And the sizing will be very different. If you buy a particular stock, maybe it is 1-2% of the portfolio. And you can live with that stock not going as well as we anticipate, because it is impossible for us to go to some place. But when we create a portfolio size, so we know that if we go down in one of those stocks, it will not contribute. And I think that is what the investors should understand. The other thing is, we have the right to sell, right? If the stock is not performing the way we expected or the price is wrong, the investor will not know, because we are not going to disclose our portfolio on a daily basis. The investors have to be cognizant of these. So just blindly copying, you're not going to do it. I think the best thing is to invest in a fund. So you automatically get Index funds are cheaper, simple and difficult to keep in mind. So why should a retail investor still consider paying for that? Well, you're right. In many markets, because they don't I just mentioned to you that apart from zero to one was contributed by very different sectors, 1 to 4 billion was contributed by business, 2 to 8 billion was very business. Those sectors and those companies and those entrepreneurs start small. And by the time they come in the results, they would have already missed a big chunk of the returns. So I think in a growing economy like India and entrepreneur-driven economy like India, I think there is still scope to create. And I think as long as they are able to create alpha, there will be place for active finance. In the large cap space, though we didn't do it, and therefore, there is still market of investors looking at passive investors. Yeah, I think you make a very important point, because so if I listen, bigger markets like US, which are more mature, index investing is big in there. But in India, so much wealth is being created in small cap stocks and small ones. Your REITs framework includes timing, but for retail investors, timing the market is usually all the mistake. So what does timing mean in your opinion? Yeah, so it's very good. So I mentioned you will follow this framework very thoroughly. So anything, but even for management, we say that how is it to do that is a quality of good management, which is discipline of capital allocation. We don't invest in loss. Typically, we like to invest in the revenues and cover and flow. The second is event management. We are in a disruptive world. And market price is equal to EPS. EPS is a PE
the recent example is that one is not wrong, but the perception because of disruption from the language is not wrong, and therefore software will fall at 30%. Same is the case with media, listening to media, worldly newspaper, new newspaper, new generation, evolving, and therefore the human behavior. A refers to time, the untimed conflict, and we are also not time. What we are basically saying is stay away from the area of being to go. If you are patient, if you identify yourself, don't chase them, don't chase things just because the thing is become exciting. So just defense and EMIs and railway and so many things to compound. They are good things, but don't chase them. Okay? You will get it. And that is what I need to say. Test the structure. There will be some company and sector where there is structure. There you will have to. Great. My next question is, everyone wants quality businesses, but quality is expensive today. As a fund manager, what do you focus on? Quality, growth, or price? So this is very close to me. So when we started in 2018, the market was very tough. So between 17 and 18, quality and price, but buying and price wasn't known. And in fact, we came up with a very simple norm in 2019, which was double and where we explained that yes, these are great businesses, great companies, but price difference. So, one part of our investment philosophy is the best company is not necessarily the best. And we are there by the company, which are also good stocks. And I think that has played. So, even now, we are very cognizant of the fact that multiple also. We're not saying that every stock will be different. But the plea has to be straight to the growth of growth. If the growth is going to be 30%, they don't mind paying it to the 30%. But for a lot of these so-called quality companies, the growth is 2%, 3%. You can't pay a 40 or 50 investment. So I think you have to, and as I said, definition of quality in the next 10 years for us is very clear. Discipline in terms of capital, the return on capital. I think as long as that is there, and I think that is where you also get an opportunity to play for. You mentioned why active. If you see the multi competition, you can get so many companies which have been great in the past, but you don't know whether they will continue to be great in the future. And I think that is where the opportunity is. In this context, what would be your current market? Markets are tough, frankly. We are very positive in 50 days back because everything was falling in place. Oil had come to 70, rupee was between 94, oil coming down, also gold and silver coming down, and it is actually not. But our view is that fundamentally oil will be 70 or 80 days. Fundamentally, rupee has to come back to 1974. Foreign knows that volume started looking at India again after 2 years of selling. We've seen positive growth. Oil was not 1995, maybe there's a growth because the global AI trade is not so things are looking there was a concern about aluminum and I think now a lot of cases we are seeing more than what we want. So hopefully, we will end the season with efficiency. Earnings are yes, there will be some sector and companies will have some impact because of the war, and that impact was spread in the economy. And we are seeing some impact. Maybe some that will also come in because of the last 12 days. The state is closed, so we will be prepared to export as import your raw material. But I think overall we are now looking at more companies. So returns will be moderate, but we are correct. So Reliance as a stock is traded extraordinarily well for a long period of time. But for today's investor, what is an honest? It's actually coming in for my last question. Yeah. What is an honest return expectation from equities? I think the Reliance will come from one point. Reliance will come has been a mix of some pay before and companies. So if they are invested over 95 level because it's more than 100 like a stock. I think obviously the case of it was lower. And this obviously not very low. It goes to all those lower times at 5 million. I think going forward, the economy is going to get more different level of so obviously the growth rates will slow down a little bit.
creativity and we are creativity. So the deviating as far as the is concerned is not going to be as high as it used to be. But given the dynamics of the economy, even towards 7% growth, which was calculated, and like 4.5% of inflation, so where the normally is only go up to 11%. And private sector normally grows 50%, 12%. So 13-14% kind of profit growth we are making. And that kind of becomes therefore definitely. But even if you grow 14%, the way so it's not that. Okay, 6% on FP plus tax. For someone watching this series who has been delayed in Bitcoin journey for a while, what is the most simplest, sensible step they can take today without overthinking? So, if you want to know adding value, first of all, you have to accept that with the book you have done. So, if you have not invested so far, first you have to admit that you are not the right issue. And you start from today. I mentioned earlier also, equity investing is about living. If you are optimistic on the future of India, if you are optimistic on the markets going forward, then you can get invested. If you are not optimistic, it is fine. Because even you are looking at the digital numbers. But I think they have not done so far. I think the best time to start is right now. Thank you, Sri. Thanks a lot. I think very short and crisp, direct to the point. And we are always positive, and our guideline will also always be positive. Thank you. Thank you. दोपहर का समय मुंबई इस वीडियो को देखिए सबसे पहले और शहर रोज की तरह भाग रहा था। सड़कों पर भीड़ थी, दुकानों में रौनक थी और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही मिनटों में मुंबई की धड़कन बदलने वाली है। फिर अचानक धमाकों की आवाज ने शहर के शोर को चीर दिया। धुआं उठा, शीशे टूटे और मुंबई डर की चादर में ढक गई। उस दिन मुंबई ने सिर्फ एक हमला नहीं देखा, उसने एक ऐसे नाम की परछाई महसूस की जो भारत की सुरक्षा के अंधेरे अध्यायों में दर्ज होने वाला था। वो नाम था दाऊद इब्राहिम, एक ऐसा नाम जिसने अपराध की दुनिया से निकलकर क्वालिटी देखिए ऐसी टूटी वीडियोस में तहलका मचा रखा है यूट्यूब पे, कोई मोनेटाइज भी होती है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। जहाँ गरीबी, डर और लालच साथ साथ पलते थे। एक साधारण घर से निकला लड़का धीरे धीरे उन रास्तों की ओर बढ़ा जहाँ कानून की किताबें कमजोर पड़ जाती हैं। बंदरगाहों से आने वाला सोना, विदेशी सामान और काला पैसा शहर की रातों में एक समानांतर सरकार बना रहे थे। दाऊद ने अपराध को सिर्फ ताकत से नहीं समझा, उसने उसे एक व्यवस्था की तरह पढ़ा। डर, पैसा और संपत्ति सब एक जाल में जुड़ते गए। धीरे धीरे ये ऐसी वीडियो मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाने वाला हूँ, इस बात को आप ध्यान रखिए, ठीक है। इसके बाद आप आ जाइए अगली वीडियो में और अगली टाइप की वीडियो भी आप देख लीजिए कि इस पूरे सेशन में पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से बताना चाहता हूँ। ये जो वीडियो एडिटिंग का काम आप देख रहे हैं ना दोस्तों, इसको सीखने में लोगों को महीनों लगते हैं, महीनों, ठीक है। और महीनों के बाद भी ये चीज नहीं आ पाती है। अब आप ये वाली वीडियो देखिए। मेरे प्यारे भारतवासियों, आज मैं आपसे केवल एआई की बात नहीं कर रहा, मैं भारत के आने वाले कल की बात कर रहा हूँ। एआई सिर्फ मशीन नहीं है, ये किसान के लिए समझदार सलाहकार है, शिक्षक के लिए शक्तिशाली सहायक है और विद्यार्थी के लिए 24 घंटे का गुरु है। एआई डॉक्टर के लिए तेज डायग्नोसिस की ताकत है, छोटे व्यापारी के लिए लोगों का नाम सिखा देंगे, सबर रखिए। युवा के लिए नए अवसरों का दरवाजा है। एआई खेत में मौसम बता सकता है, दुकान में स्टॉक संभाल सकता है, बच्चे को पढ़ा सकता है और मरीज तक इलाज पहुंचा सकता है। एआई मजदूर को नई स्किल सिखा सकता है, किसान को सही फसल का निर्णय दे सकता है और छोटे शहरों के युवाओं को बड़े सपनों से जोड़ सकता है। Introducing speech engine, with developers to turn chat agent into a voice agent with the one prompt. I need to reschedule my delivery. Can you move it to Thursday? No, I've moved it to Thursday between 2 and 4 p.m.
देख ली। अब अगली वीडियो पे आ जाते हैं और एक वीडियो और मैं दिखाता हूँ आपको, और उसके बाद हम अपनी ये सब चीजें बनाना शुरू करें। और आपको मैं दिखा रहा हूँ कि किस लेवल की जो चीजें हैं वो आपके सामने बन के तैयार हो गई हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं इस वीडियो के ऊपर और इसकी शायरी सुनिए और ये देखिएगा कि संसद में मैं भाषण दे रहा हूँ। अच्छा, ये जो वीडियो है अभी आपकी स्क्रीन पर दिखाई आएगी। भाई ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि इस टाइप की चीज है, मेरा उस भाषण से लेना देना नहीं है, लेकिन आप देखिए कि कैसे शायरी से स्टार्ट होकर किस लेवल की चीजें हैं। तो साइड में पीछे जो लोग बैठे हैं उसको देखिए आप। क्या हाथ में है पर काम नहीं मिलता, हर इंटरव्यू के बाद कोई पैगाम नहीं मिलता। घर वाले कहते हैं बेटा हिम्मत रख, पर खाली जेब में अब आराम नहीं मिलता। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं करोड़ों युवाओं की आवाज उठा रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी, भारत का युवा रात रात भर जाग कर पढ़ता है, पिता पैसा जोड़ता है, और this paper leak is a betrayal. You are ruining their lives. Millions are demanding answers. We will not let this go. Prime Minister, you must answer. चलिए, अब ये भी हो गया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए भाई, सबसे पहले मुझे ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकल करके दिखानी, इसलिए मैंने पूरा सेटअप अलग अलग तरीके से यहाँ पर आपके सामने लगा रखा है। सबसे पहले आप ये देखिए, ऐसी वीडियो बनाना, ऐसा विजुअलाइजेशन बनाना जिसमें रियल बंदे की कोई जरूरत ही नहीं, और रियल बंदे की जरूरत वाली भी वीडियो है, लेकिन मैं आपको दिखाता ही रहूँ इसलिए मैं यहाँ पर नहीं आया, ठीक है। अब बिल्कुल सुनने से मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। देखिए, सबसे पहले कोई भी वीडियो बनानी है, उसमें आपको एक स्क्रिप्ट चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ जो 2D वाली वीडियो है, जो 2D एनिमेशन वीडियो है, जिसमें कहीं से कहीं तक कोई वायलेशन नहीं आता है, कुछ गलत अनएथिकल करने की कोशिश आपको वीडियो एडिटिंग से नहीं करनी है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले जिस चीज की जरूरत है वो है एक प्रॉम्प्ट जो स्क्रिप्ट लिख देगा। देखिए, स्क्रिप्ट तो आप भी लिख सकते हैं, जो आपके मन में हो वो भी लिख सकते हैं। वो प्रॉम्प्ट मैं आपको लास्ट में दे दूंगा, मैं सब बता दूंगा कहाँ मिलेगा, अभी सिर्फ सीखो। सबसे पहले मैं एक प्रॉम्प्ट ले रहा हूँ और उस प्रॉम्प्ट को यूं की यूं आपके सामने मैं यूज करूंगा। हम जाएंगे पहले चैट जीपीटी में, फिर गूगल ओनली में, ठीक है। दो चीजें हम यूज करने वाले हैं, तो दो चीजों का यूज है, और आप मैजिक देखते जाइए आपके सामने क्या होगा। अब मैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन कनेक्ट कर रहा हूँ, आपका जो सारा ध्यान है वो स्क्रीन पे रहना चाहिए। आई प्रॉमिस यू कि आपको मेरे दोस्तों मैं प्रॉम्प्ट दे के जाऊंगा, लास्ट में मैं सब बताऊंगा, वीडियो एंड तक देखते रहिए, ठीक है। चलिए, अब मैं आपके सामने यहाँ पर मेरा कैमरा है जो वो छोटा कर लेता हूँ और मेरी स्क्रीन है जो वो कनेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं आपको बहुत छोटा सा दिखाई आ रहा होगा, ठीक है, यदि आप देख पा रहे हो। इसको मैं थोड़ा सा टाइप चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको मैं और बेहतर नजर आ जाऊँ, ठीक है। लीजिए, अब मैं आपको यहाँ पर दूसरे कैमरे में नजर आ जाऊंगा, जो कि छोटा कैमरा है मेरा, ठीक है, जिससे आप मुझे पूरा मेरी स्क्रीन के अनुसार मुझे देख पाएंगे, ठीक है। अब मेरी स्क्रीन पर ज्यादा ध्यान, मेरी तरफ ज्यादा ध्यान मत दो, स्क्रीन की तरफ ध्यान दो, ठीक है। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, कृपया करके मेरी टीम मेरी आवाज सुन रही है, तो मुझे एक बार ये इंटरफेस चेंज हुआ तो मुझे बता दें फटाफट, ठीक है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपको, 1600 की संख्या में लाइव हो, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर चैट जीपीटी पे आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर चैट जीपीटी पे आ जाते हैं, बिल्कुल आप अच्छे से देख लीजिए सब लोग, ये चैट जीपीटी है आपका, और यहाँ पर हम आ गए, ठीक है। अब ये मैंने एक प्रॉम्प्ट तैयार कर रखा है, ये वाला, ठीक है। किसी भी 2D एनिमेशन की मूवी बनानी है तो ये कॉपी किया मैंने, ये स्क्रीन चेक कर लेना, हाई क्वालिटी में आ रही है, ठीक है। अब इसमें देखो, एडिटेड वीडियो आपको बहुत लोग सिखाते हैं, मतलब एडिट करके डाल देंगे, रियल जो दिक्कतें आएंगी वो कोई बताएगा ही नहीं। तो आप ये देखो मेरे दोस्तों कि मैंने यहाँ पर चैट जीपीटी में आके ये एक प्रॉम्प्ट है जो मैंने पेस्ट किया है। ये प्रॉम्प्ट कैसे बना मैं ये भी बताऊंगा। ये प्रॉम्प्ट मतलब अब तुम घबराना मत किसी बात को, भाई भगवान कसम श्याम बाबा से ऊपर किसी चीज को नहीं मानता, श्याम बाबा की सौगंध, ये प्रॉम्प्ट आपको भेजूंगा, आप पढ़ लेना इसमें क्या क्या लिखा हुआ है और आप उसे बिल्कुल अच्छे से इम्प्लीमेंट कर
सबसे पहले मैंने एक स्क्रिप्ट लिखनी है मुझे, और मैंने उसके लिए क्या कर दिया, ये प्रॉम्प्ट डाल दिया। स्क्रिप्ट को आप कैसे भी लिख सकते हैं। अब ये देखिए, मैंने इसको बता रखा है कि भैया किस किस चीज की मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने पूरा प्रोडक्ट को बना रखा है, ऑटोमेटिकली सारा काम होता जाएगा। अब वो आपको ये कह रहा है कि इस प्रॉम्प्ट डालने के बाद आप इसी प्रॉम्प्ट से किसी भी चीज की स्क्रिप्ट लिखवा सकते हैं। वो कह रहा है ये 3 आइडियाज है जिसके ऊपर आप बनाना चाहते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं तो किस पे बनाना चाहता हूँ, मैं तो ईरान, अमेरिका और इजराइल वॉर पर बनाना चाहता हूँ। मैं 2D डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता हूँ, ईरान, अमेरिका और इजराइल वॉर पे बनाना चाहता हूँ मैं। ये मैंने इसको बता दिया। वो कह रहा आपके पास कोई स्टोरी है या मैं इनमें से किसी में काम शुरू करूँ, तो मैंने कहा नहीं, मेरी अपनी स्टोरी है। आपको सिर्फ इस प्रॉम्प्ट का उत्तर देना है। ये मैजिक मैं आपको सिखा भी दूंगा और ये प्रॉम्प्ट मैं आपको दे भी दूंगा। अब वो कह रहा है ठीक है, ईरान, अमेरिका और इजराइल वॉर पर बनाना चाहता हूँ। उसने कहा ठीक है भैया, बड़ा बढ़िया टॉपिक है और ये आपको बता रहा है कि क्या है। ठीक है, अब वो कह रहा है बहुत अच्छा टॉपिक है, हाई टेंशन जियोपॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्री बनेगी, युद्ध, तेल, परमाणु शक्ति, खाड़ी, अमेरिका इजराइल गठबंधन और ईरान की जवाबी रणनीति के साथ। ठीक है, चलिए। अब वो कह रहा है आपको कितने मिनट की स्टोरी चाहिए, 5 मिनट या 8 मिनट। 5 मिनट की वीडियो बनाने में हमें बहुत समय लग जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, 5 मिनट लिख देते हैं। ठीक है, ये अपने आप पूछेगा। मैंने ऐसा प्रॉम्प्ट बना रखा है, ऐसा वर्कफ्लो बना रखा है कि ये अपने आप पूछेगा। तो ये आपको स्क्रीन पर सब कुछ दिखाई आ रहा है। मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई आए। ये देखिए, ये पूरा का पूरा ये क्या कर रहा है, ये कुछ कैरेक्टर डिजाइन कर रहा है कि भाई ये कैरेक्टर होंगे इसमें। ठीक है, उसके बाद ये पहले कैरेक्टर सेट कर रहा है बिल्कुल अच्छे से, एक एक चीज। ठीक है, इसको करने दो। अब वो कह रहा है आप स्टार्ट देखो, मैं 5 मिनट में पूरी डॉक्यूमेंट्री बना दूंगा, मतलब स्क्रिप्ट लिख दूंगा। ठीक है, तो मैंने लिख दिया स्टार्ट। ये प्रॉम्प्ट आपके पास भी ऐसे ही काम करेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। अब ये देखो, ये पूरा का पूरा जो स्क्रिप्ट है वो लिख रहा है। इसको लिखने दो स्क्रिप्ट। ठीक है, इसको बिल्कुल अच्छे से स्क्रिप्ट लिखने दो और आपको कुछ नहीं करना, देखते जाओ 2D कैसे बनेगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा कि यार ये क्या कर दिया गूगल ने तो तहलका मचा दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया, 2000 पार कर दो, 2000 पार करो। लाइक वीडियो को लाइक शेयर उतना नहीं चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखते जाइए। ये पूरा का पूरा स्क्रिप्ट लिख रहा है। आपको अल्टीमेटली जब आप अपनी रियल वीडियोस बनाएंगे ना, इस स्क्रिप्ट को पढ़ेंगे, इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज भी करेंगे, लेकिन अभी हम कुछ चेंज नहीं करेंगे। अभी हम इसकी जो स्क्रिप्ट है इसको लिखने दो, हम सिर्फ वेट कर रहे हैं स्क्रिप्ट का। इसको स्क्रिप्ट लिखने दो। ठीक है, अब इसने स्क्रिप्ट है जो हमारी लिख दी, पूरी स्क्रिप्ट हमारी फाइनल कर दी। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास दूसरा प्रॉम्प्ट है। ठीक है, ये दूसरा प्रॉम्प्ट है ये वाला। ठीक है, ताकि इससे आगे की चीज भी हम इसको बता पाए। और मैंने इसको यहाँ पर मैंने इसको दूसरा प्रॉम्प्ट डाल दिया है। ये प्रॉम्प्ट आपको मिल जाएगा। आज आप वीडियो बनाना सीख रहे हैं, क्योंकि यदि मैं प्रॉम्प्ट लिखना समझाने लग गया तो पूरी क्लास प्रॉम्प्ट पे ही चली जाएगी। ठीक है, अब ये देखो, ये इसने बना दिया कि भैया किस तरीके से आपको चीजें करनी है। सीन 1 बना दिया। ठीक है, ये वीडियो प्रॉम्प्ट बना दिया इसने पूरी तरीके से। ये सीन 2 बना दिया, इसने सारे सीन्स बना दिए। ये पूरी की पूरी। अब मतलब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो क्या है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से समझना कि जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो वीडियोस गूगल बनाता है या कोई भी एक प्लेटफॉर्म बनाता है वो 8-10 सेकंड से ज्यादा की नहीं बनाता है। 8-10 सेकंड से ज्यादा की नहीं बनाता है। अब वो कह रहा है कि भैया क्या करूं, कंटिन्यू कर दूं अगले सीन। भाई कितने सीन बना दिए इसने, 5 सीन बना दिए। तो मैं ये कह रहा हूं एक सीन की ड्यूरेशन 10 सेकंड रखना। एक सीन की ड्यूरेशन 10 सेकंड रखना। उसके अनुसार दोबारा लिखो और 10 सीन्स के वीडियो प्रॉम्प्ट लिखो। मैं इसमें से भी एक हटा रहा हूं, इमेज प्रॉम्प्ट्स नहीं लिखने। वीडियो 16
चैट की हिस्ट्री दूंगा। अब देखिए ये आपके सामने पूरा का पूरा क्लियर है। अब तुम बस हो जाओ शुरू वीडियो बनाना। अब पूरी वीडियो बनाना शुरू हो जाओ। तुम्हें क्या करना है भैया, सीधा उठाना है सीन 1, ठीक है, और इसको पूरे को उठा के तुम ले जाओ, ये रहा, पूरा कॉपी करो। Suffering from bad service manager? You're a service manager from the West. AI catches incidents or and tells you where to act first. And the BSM now. Try your service manager today. तुम जाओ भैया, अब बोलो तुम गूगल, ठीक है, और गूगल में तुम बोलोगे गूगल फ्लो, गूगल फ्लो, ठीक है, गूगल फ्लो बोलना है। वो जो गूगल ओमनी है ना, वो उसके अंदर ही है। जैसे ये गूगल फ्लो आ गया तो मैंने ये गूगल फ्लो बोल लिया। इसमें लास्ट में ये बताऊंगा फ्री क्रेडिट कैसे मिलेंगे आपको। 1000 फ्री क्रेडिट मिलेंगे जिनसे आप वीडियो बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आपका गूगल फ्लो खुलेगा तो न्यू प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करेंगे। ये न्यू प्रोजेक्ट आपका आ गया। अब भाई साहब कुछ नहीं करना तुम्हें, मतलब बस इतना नहीं वीडियो बन जाएगी। देखो, और ये गलतियां भी कर सकता बीच में, प्रैक्टिकल वर्क में गलतियां करेगा। देखना भैया, अब मैं यहाँ पर आपको पेस्ट कर रहा हूँ। ये मैंने अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दिया, ना मैंने फोटो दी, ना मैंने कुछ दिया, मैं तो कुछ नहीं दे रहा, मैं तो सिंपल ही दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ एजेंट भी है, मैं एजेंट का यूज करना भी सिखाऊंगा। लेकिन पहले क्या हो, इस वीडियो वाले उस पर क्लिक करो। ये देखो, ये वीडियो वाला है, इस पर क्लिक करो। यहाँ इमेज नहीं, हमें वीडियो बनानी है। यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स देना है तुम्हें तो ठीक है, नहीं देना तो मतलब इंग्रेडिएंट्स रखो। 9/16 मतलब खड़ी वीडियो बनेगी और इससे बड़ी वीडियो बनेगी। एक बार में तुम एक ही वीडियो के कितने आउटपुट जाते हो, तुम्हें एक ही रखना है, क्योंकि नहीं तो तुम्हारे क्रेडिट बहुत खराब हो जाएंगे। तुम वीडियो में वर्जन कौन सा चाहते हो, ये देखो, वीडियो 3.1, 3.1, 3.1 या ओमनी फ्लैश, ये है ओमनी फ्लैश जो सबकी बात लगा देगा। और यहाँ पर 10 सेकंड रखना है, और यहाँ पर आपके 30 क्रेडिट खर्च हो गए इस एक 10 सेकंड की वीडियो को बनाने में। 1000 क्रेडिट फ्री में तुम्हें मिल जाएंगे, और उन्हें रिन्यू कैसे करना है वो भी मैं बता दूंगा। तो अब मैंने बस ये सारी सेटिंग करके और मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया, और ये मेरी वीडियो बनाने लग गया। और देखते हैं कि ये वीडियो कैसी बनाता है, ठीक है। ये बस हो गया काम, बस इनको जोड़ना होगा, ठीक है। देखते जाना तुम क्या क्या करके दिखाऊंगा तुम्हें। ये वीडियो बना रहा है, इसको वीडियो बना लेने दो, ठीक है। देखते हैं ये क्या करेगा। हाँ, कई बार जो स्क्रिप्ट है उसमें चेंज करना पड़ सकता है, वीडियो प्रॉम्प्ट में चेंज करना पड़ सकता है। एआई सब कुछ है, लेकिन इंसान के बिना एआई कुछ नहीं है। वो इंसान सबसे ज्यादा कामयाब होगा आने वाले दुनिया में जो सबसे ज्यादा एआई को समझ के यूज करना सीख जाएगा। और भाई ये सब चीजें आप अर्निंग के रूप में यूज कर सकते हो। इस बात को बिल्कुल अच्छे से समझ लेना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, 2165 लाइक हो चुके हैं, संख्या और बढ़ाई जाए। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा दोस्तों, 1 मिनट भी नहीं करूंगा, ट्रस्ट में दोस्तों। चलिए, बहुत बढ़िया, आप लाइव में नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहे हैं। ये देखिए, ये वीडियो बन गई है भाई, ठीक है। अब ये वीडियो बन गई है तो अब ये मुझे चला के दिखानी पड़ेगी आपको, ठीक है। अब मुझे ये देखना पड़ेगा, यहाँ लोगों भी हटाना सिखा दूंगा, शांति रखना, ठीक है। बीच में बस सवाल नहीं पूछना। अब क्या करना है, ये वीडियो बन के तैयार हो गई है, इसके ऊपर क्लिक करना है, और क्लिक करके इसको प्ले करके देख लो पहले, ठीक है। अब मुझे ये बता देना यहाँ आवाज आई या नहीं आपको, ठीक है। 24 मई 2024 रात 2:17 फारस की खाड़ी के ऊपर आसमान असामान्य रूप से शांत था। देखो क्या बना है इसने, मतलब तुम ध्यान से देखो, ये पूरी स्क्रीन पे देखो। 24 मई 2024 रात 2:17 फारस की खाड़ी के ऊपर आसमान असामान्य रूप से शांत था। ठीक है, अब तुमने देख लिया, ठीक है। अब मैं एक बार इसकी ऑडियो क्रॉस चेक कर लेता हूँ भाई। मैं
दिखाना तो मैं साथ में इसकी जो ऑडियो आप तक आ रही है या नहीं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। इसकी ऑडियो ठीक है, ये आवाज आ गई ना आपको? ठीक है, बस मेरे को वेरीफाई करना पड़ता भाई डिफरेंट सेटअप्स के तहत। प्रैक्टिकल वर्क इसलिए लोग करके नहीं दिखाते क्योंकि बहुत हेडेक होती है, लेकिन मैं आपको लाइव भाई मैं ऐसे ही बनाता हूँ, टेंशन मत लो। ठीक है, अब तुम इसको बैक करो, अब तुम आ जाओ दूसरे सीन पे। ठीक है, ये दूसरा सीन है, बस तुम इसको कॉपी करो। अब ये दूसरा सीन है, तुम इसको कॉपी करो या गूगल फ्लो में आ जाओ। बस कुछ नहीं करना, पेस्ट करना है। 2D डॉक्यूमेंट्री ऐसे बना के दिखाते हैं आपको। ठीक है, अब देखना ये बना देगा आपके लिए 2D डॉक्यूमेंट्री पूरी। मतलब ऐसे 10-10 सेकंड के सीन बनेगा और फिर बताऊंगा इन्हें जोड़ना कैसे। कोई चुनौतीपूर्ण काम नहीं है भैया, कुछ भी चुनौतीपूर्ण काम नहीं है। देखते जाओ किस किस तरीके से क्या क्या काम होने वाला है। मतलब मैं 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करूंगा आपकी। ठीक है, प्रॉम्प्ट मैं आपको सीधा दे दूंगा, लेकिन आप अभी देखते जाओ कि यहाँ पर क्या क्या होने वाला है। कम से कम 1 मिनट की वीडियो बनाएंगे और फिर हम दूसरे टाइप की वीडियो पे आएंगे। दूसरे टाइप को भी समझना जरूरी है, तीसरे टाइप को भी समझना जरूरी है। चलिए देखते जाइए, पेशेंस तो यहाँ रखना पड़ेगा भाई। जो लोग 50-50 हजार 1-1 लाख रुपए खर्च करके वीडियो एडिटिंग करना सिखाते हैं, गूगल ने सबकी ऐसी कैसी कर दी। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम इसी वीडियो से एक्सपर्ट हो जाओगे, सीखना तो तुम्हें भी बहुत कुछ पड़ेगा, लेकिन प्रोसेस यही है। ठीक है, अब उसके अंदर और क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होती है, वो सब चीजों को समझना तो पड़ेगा, लेकिन उसका भी सोल्यूशन बताएंगे आपको। टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब तुम देखते जाओ कि किस तरीके से अब ये वीडियो बनने वाली है, बन गई। ठीक है, अब देखो वीडियो
अब मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, पहले वाले में यहाँ पर ऐड नहीं थी, तो यहाँ पर मैं जाता हूँ, इसी को एडिट करना है ताकि दोबारा आपके क्रेडिट वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर आप एडिट में देखिए, जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं ना, ये गलत बना दूसरा सीन, ठीक है, हमने ही दूसरी जगह दे दिया उसको, ठीक है, थोड़ा सा जल्दबाजी में ये मिस्टेक कर दी हमने। हम यहाँ से पहले से लेते हैं दोबारा, छोटा सा ये चीजें होंगी, ठीक है, थोड़ा सा बार बार मेरे को ये देखना पड़ता है ना, तो मैं इसको भी एक बार डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, मूव टू क्रैश। अच्छा ये था ना यहाँ पर, चलो कोई नहीं, इसको भी हटा देते हैं, थोड़ी स्क्रीन शॉट ही करते हैं ताकि दिखता रहे हमें क्या क्या हमारे पास। कोई बात नहीं, ये सब चीजें चलती है। अब मैंने यहाँ पर पहला पेस्ट किया और यहाँ पर एंटर कर दिया, अब ये बना देगा। अब मैं क्या करता हूँ, तब तक दूसरे को ले आता हूँ और ये दूसरा है, ये दूसरा है, इसको कॉपी कर लिया हमने। 5 बनाएंगे, थोड़ा सा पेशेंस तो रखना होगा, ठीक है। ऐसी ऐसी चीजें ना यूट्यूब पर मिलेंगी नहीं भाई कि आपको रियल प्रैक्टिकल वर्क है जो आपको करके दिखाया जाए, ये चीजें मिलती नहीं है, सब्र रखना पड़ता है। बहुत सारे लोग एकदम से भाग लेंगे कि बस अब तो हमको आ गई। जो चीज को सीखने में लोगों को 2 साल लगते हैं, तुमसे मैं 1-1.5 घंटा मांग रहा हूँ, इससे ज्यादा नहीं मांग रहा मैं कि भाई मैं तुमसे कई जन्म मांग रहा हूँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आज की वीडियो में तुम्हें बहुत कुछ बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद जिसमें सब्र होगा वो तो उसको तो जीवन में कई चीजें करनी ही पड़ती है भाई, ठीक है। मैंने 2 कैमरे और सारा 3 कंप्यूटर कनेक्ट कर रखे हैं, ठीक है, ताकि आपको रियल प्रैक्टिकल वर्क करके दिखा सके। नहीं तो क्या होगा, एडिट करके मैं भी डाल दूंगा, जो ये बीच की मिस्टेक्स होंगी आपको पता ही नहीं चलेगी कि भाई कैसे करेक्शन करने पड़ते हैं। कोई गलती करे तो वो करेक्शन करने पड़ते हैं, ठीक है। अब ये बना दिए इसने, ठीक है, अंधेरा ज्यादा कर दिया इसने, आपको इसलिए नहीं दिख रहा, ये देखो। मई 2026 रात 2:17 फारस की खाड़ी के ऊपर आसमान असामान्य रूप से शांत था। ठीक है, अब आ जाओ दूसरे पे, ठीक है। अब इसको मैं बैक कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं अगली कमांड दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर पेस्ट कर दिया मैंने दूसरा और इसको एंटर कर दिया। अब वो वाला हमारा इधर आ गया, देखो इस साइड आ गया। वो शुरू में अंधेरा है ना, इसलिए वो ब्लैक दिखाई आता है जब हम इधर कर लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा बनेगा, फिर तीसरा बनाएंगे, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर पांचों को जोड़ के दिखाएंगे, फिर वीडियो को एक्सपोर्ट करके दिखाएंगे। ये होगा ऐसे ही। आपको कितनी भी 10 मिनट की वीडियो बनानी हो, 20 मिनट की बनानी हो, ये फेस कर दिया गूगल ने भाई साहब, ठीक है। और सुन लो, एआई सीखनी पड़ेगी, नहीं तो तुम्हारी बैंड बजनी तय है, ठीक है। पर तसल्ली से सीखो जो आदमी ढंग से सिखा सके, ठीक है। यदि तुम में से किसी के मन में बहम है ना कि बिना एआई के तुम आगे जीवन में कुछ बहुत अच्छा कर लोगे, तुम मान लो पढ़ रहे हो भाई, रील भी तो देखते हो, टाइम भी तो वेस्ट करते हो। मान लो तुम सीटेट की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, सरकारी नौकरी कर रहे हो, या सरकारी नौकरी कर रहे हो या प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, इसको अपना लो। जिसने इसको 2-4 घंटे देना शुरू कर दिया उसका जीवन सुधरना शुरू हो जाएगा। और मेरे जैसे 20 पागल ने इसको दिन रात देना शुरू कर दिया, राजा बनेंगे भाई, राजा, ठीक है। अब आ जाओ अगली वीडियो में, देखो सेकंड पार्ट बन के तैयार है। Speech engine combines our video voice models into a single pipeline, all custom built to work fast together and connects directly to your existing agent. Your LLM, RAG, and orchestration all remain untouched with expressive humanoid voices in 70+ languages, industry-leading transcription, and dedicated models for natural turn-taking, voice detection, and interruption handling, all secured with enterprise-grade compliance. Speech engine is available now in 11 API. Add voice to your agent today. नीचे समुद्र काला दिखाई दे रहा था, लेकिन उस कालेपन के भीतर दुनिया की सबसे खतरनाक बेचैनी छिपी थी। देखिए भाई, दूसरा सीन बन गया। अभी देखते जाना, सब आएगा, ठीक है, सब कुछ आएगा। ये तीसरा है, ठीक है, तीसरा सीन। अब इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। वो तो जैसी स्क्रिप्ट हम लिखेंगे उसके अनुसार चलेगा सारा चीज,
ठीक है, अब ये आ गया आपका तीसरा सीन और ये तीसरा पन्ना शुरू हो गया। ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। और जो भी गलती हो इसमें वो एडिट कर सकते हो आप यदि इसको ये भी बोलना चाहो ना पहले सीन में कि मतलब तुम स्क्रिप्ट पढ़ो, उसके अनुसार तुम्हें बीच में जहाज चाहिए था दूसरी स्क्रिप्ट में, मान लेते हैं दूसरी स्क्रिप्ट में तुम्हें जहाज चाहिए था तो वो जहाज भी आ जाता, समुद्री जहाज भी आ जाता, वो तुम्हें अपने प्रॉम्प्ट में ऐड करना पड़ता। बस इतनी सी बात है, कोई और लंबी चौड़ी चीज नहीं है, जो तुम्हें चाहिए बस तुम्हें लिखना है, ठीक है। और जोड़ना, वीडियो जोड़ना किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, ठीक है, यही जुड़ जाएगी। हाँ, और ज्यादा ट्रांजिक्शन डालने हो वो करने हो भाई वो तो देखो आगे चल के सीखना पड़ेगा। वो अब यहाँ पर मैं तुम्हें रेडीमेड वीडियो बना के तुम्हें आगे भेजनी सिखा रहा हूँ, ठीक है, और बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी। और उसके अंदर वो सॉफ्टवेयर लगा दोगे सारे, पिछले 20 साल का अनुभव लगा देगा कोई वीडियो एडिटर, तो 19-21 तो कर सकता है, लेकिन मतलब बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर सकता कुछ। अब ये देखो तीसरा सीन बन गया, अब देखना तीसरा सीन। मध्य से गुजरते तेल के जहाज धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। भाई साहब देख रहे हो सीन, दोबारा सुनो। मध्य से गुजरते तेल के जहाज धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। देख रहे हो भाई साहब सेंसेशन, ठीक है। अभी देखना चौथा सीन बनाते हैं, फिर सबको जोड़ते हैं और फिर एक साथ सुनते हैं इनको, ठीक है। 5 बनाएंगे हम, ठीक है। बेटा बोला था ना समझ रखो, ठीक है, बेस्ट सिखाऊंगा भाई। आधा अधूरा काम नहीं करते हम अपने बच्चों के साथ, ठीक है, जो करते हैं पूरी शिद्दत से करते हैं, पूरी ताकत से करते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। 2000+ लाइक चल रहे हैं, बहुत अच्छे। जोड़ना सीखना, उसके बाद तुम्हें अपनी खुद की फोटो से वीडियो बनाना सिखाऊंगा। खुद शायरी बना के अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब बना सकते हो तुम। ऐसी 2D एनिमेशन की वीडियो इतनी वायरल है, तुम कार्टून वीडियो बना सकते हो भाई साहब। इतना पैसा आता है और ये वीडियो मोनेटाइज होगी। कोई चाह बन रहा होगी एआई की वीडियो मोनेटाइज नहीं होती। एआई के किसी प्लेटफॉर्म में जो वीडियो बना के दे रखी है वही डालोगे तो नहीं होगी। अपनी क्रिएटिविटी करके डालोगे तो मोनेटाइज होगी। यदि मोनेटाइज नहीं होती तो ये पागल है क्या, ये इतने बड़ा पैसा खर्च कर रहे हैं, यदि मोनेटाइज नहीं होती तो कोई वीडियो बनाएगा ही नहीं इसे, ठीक है। तो कोई भी ये ना सोचे कि मोनेटाइज नहीं होगी वीडियो, इस बात को सब लोग ध्यान रखें, ठीक है। सारी वीडियो मोनेटाइज होगी। अब मैं एक 5वां सीन और ले लेता हूँ, ठीक है, एक 5वां सीन और ले लेता हूँ। हालांकि देखिए स्क्रिप्ट धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, टाइम तो लगाना पड़ेगा आपको। 20-25 मिनट की वीडियो बनानी है तो 5-4 घंटे लगाने पड़ेंगे, लेकिन भाई साहब वो वीडियो वायरल होंगी, ठीक है। देखो अगला सीन। हर जहाज के साथ दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन भी चल रही थी। देखो हर जहाज के साथ दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन भी चल रही थी। देखिए अब इसने गलती कर दी यहाँ पर कि धड़कन 2 बार बोल दिया, तो यहाँ से ऑब्जर्व करो कि धड़कन कितने सेकंड में बोल रहा है, और यहाँ एडिट में उसको डाल दो कि भाई ये धड़कन 2 बार रिपीट कर दिया है, इसको आप ठीक कर दो। बस इतना सा काम करना है और कुछ भी नहीं। एंड लास्ट वन, फिर इसके बाद इसको जोड़ के भी दिखाते हैं ताकि आपको ये ना लगे कि जोड़ना शायद कोई बहुत चुनौतीपूर्ण काम है ना। 10-10 सेकंड की बन रही है तो जोड़ना भी कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई, इस बात को ध्यान से सुनिए। अब देखिएगा इसके बाद क्या करके दिखाता हूँ तुमको, ठीक है, देखते जाइए। बहुत लंबी चौड़ी चीजें बची नहीं है, मतलब तुम यार क्या सोच रहे हो, वो क्या रहा है दुनिया में, ठीक है, मतलब बहुत अलग सी कहानी दुनिया में लिखी जा चुकी है भाई। और आने वाला समय एआई का बहुत बड़ा समय है दोस्तों, कोई हल्के में मत लेना, ठीक है। जिसके भी मन में बहम हो वो सारा बहम निकाल देना। आज से 1 साल के बाद इतनी पीछे पड़ा मिलेगा। और सुन लो, तो ये बना रहा है तब तक बता देता हूँ भाई साहब, लोग है ना एआई के नाम पर, मैं आपको बता रहा हूँ 20-20, 50-10 हजार फीस ले रहे इन्हीं सब चीजों को सिखाने की, ठीक है। और अब वीडियो बन गई, देखो ये रही वीडियो।
उसी रात तेहरान, वॉशिंगटन और तेल अवीव में 3 अलग-अलग कमरों की रोशनी बुझी हुई थी। ठीक है, अब ऐसे ही अब इनको जोड़ना है। तो अब एक काम करो, जोड़ना इनको बड़ा सिंपल टास्क है। पहले पे जाओ, ये पहला सीन है, इस पे क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ देखो ये जो नीचे पट्टी नजर आ रही है, इस पे क्लिक करो, ठीक है। और ये प्लस का निशान आ गया, प्लस पे क्लिक करो, ऐड क्लिक करो, और ऐड क्लिक में यहाँ पर देखिए दूसरा सीन कौन सा था, ये था ओशियन सरफेस। ये दूसरा सीन आप इस पे क्लिक करो और यहाँ पर ऐड टू सीन कर दो, बस और कुछ नहीं करना। देखते जाना अभी आगे क्या करना है, कितनी लंबी वीडियो बना रहे यहीं पे। और अभी देखना जब हम 50 सेकंड की वीडियो डाउनलोड करके आपको चला के दिखाएंगे, फिर मैं कुछ और वीडियो आपको चला के दिखाऊंगा कि भाई ये सारी वीडियो ऐसी ही बनी हुई है और इनके अंदर क्या क्या चीजें। और फिर हम अगली टाइप पे आएंगे। हड़बड़ा के भागने की जल्दी मत करना, नहीं तो ना तो प्रॉम्प्ट मिलेगा, ना स्क्रिप्ट मिलेगी, ना कुछ मिलेगा, ठीक है। क्योंकि बाद में तुम वीडियो ढूंढते रह जाओगे, मिलेगी नहीं वीडियो, ठीक है। अब ये इसने ऐड कर दिया, आगे देखो, ठीक है। अब तुम पहले एक काम करो, इसको चला के देखो। 24 मई 2026 रात 2:17 फारस की खाड़ी के ऊपर आसमान असामान्य रूप से शांत था। नीचे समुद्र काला दिखाई दे रहा था, लेकिन उस कालेपन के भीतर दुनिया की सबसे खतरनाक बेचैनी छिपी थी। 24 मई 2026 ठीक है, अब ये रिपीट करने लग गया। अब क्या करना है, तीसरा सीन ऐड करना है। तो इस पे दूसरी पट्टी पे क्लिक करो, दूसरी पे पहले क्लिक करना है, तभी ये प्लस का निशान आएगा। अब ये प्लस किया, ऐड क्लिक किया, ये तीसरी क्लिप यहाँ से सेलेक्ट की, इसको ऐड कर दिया, ठीक है। इसी तरह फिर ये जो तीसरा सीन है, इस पे क्लिक किया, इस पे प्लस पे क्लिक किया, ऐड क्लिक किया और यहाँ पर चौथी पट्टी में क्लिक कर दिया, ठीक है। इसके बाद इनमें ट्रांजैक्शंस में जहाँ पर ज्वाइंट है वहां पर थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग करनी है, वहां पर भी मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। सब रखिएगा, जरूरत नहीं है लेकिन, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये भी आएगा थोड़ी आवाज अलग आ रही है या कुछ आ रही है, लेकिन 2D एनिमेशन में उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, ज्यादा जरूरत लोड देने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन चीजों को भी सेट किया जा सकता है, लेकिन ये बहुत रिफाइन चीजें हैं और इनके अंदर बहुत डिटेल में आपको जाना पड़ेगा, लेकिन ये चीजें इतनी भी सफिशिएंट है, ठीक है। आप देखते जाइए, सबसे पहले तो आपको वो डर खत्म करना होगा कि एआई कोई बहुत टेक्निकल चीज है, आपको सबसे पहले वो डर खत्म करना होगा। अब जैसे ये देखिए, 5 सीन भी मैंने ऐड कर दिया है और ये पूरा 50 सेकंड का हो गया। अब एक काम करते हैं, इसको सबसे पहले डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। एक बार आने दो इसको, यहाँ पर विजुअलाइज होने दो, ठीक है। ये हो गया विजुअलाइज, ठीक है। यहाँ पर मैं अब क्या करता हूँ, इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये डाउनलोड हो रही है पूरी वीडियो, बड़ा सिंपल सा काम है। 50 सेकंड की वीडियो आपकी तैयार हो गई है, ठीक है। अब इस वीडियो को मैं आपके सामने चला के दिखाऊंगा और फिर एक और वीडियो चला के दिखाऊंगा। मैंने दाऊद इब्राहिम का पार्ट 1 आपको चला के दिखा दिया, मैं पार्ट 2 भी चला के दिखाऊंगा। लेकिन अभी उससे पहले तो बहुत मैजिक बने हैं यारो, तुम लोग किस चक्कर में पड़े हुए हो ना, मतलब तुम समझ ही नहीं पा रहे कि क्या क्या होगा इस वीडियो में, ठीक है। तुम्हें लग रहा मजा आ गया, यही तो हमारे इंडियन ऑडियंस की समस्या है कि पेशेंस नहीं है लालों में, ठीक है। लीजिए भैया, मैं एक बार ब्राइटनेस बढ़ा लेता हूँ, शायद कम हो गई। अब वीडियो सुनो। 24 मई 2026 रात 2:17 फारस की खाड़ी के ऊपर आसमान असामान्य रूप से शांत था। नीचे समुद्र काला दिखाई दे रहा था, लेकिन उस कालेपन के भीतर दुनिया की सबसे खतरनाक बेचैनी छिपी थी। होर्मुज़ जलडमरू मध्य से गुजरते तेल के जहाज धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। हर जहाज के साथ दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन भी चल रही थी। उसी रात तेहरान, वॉशिंगटन और तेल अवीव में 3 अलग-अलग कमरों की रोशनी बुझी हुई थी। अब देखो, एक चीज तुम्हें यहाँ पर अब मैं एक बार मैं मेरा मेन कैमरा कनेक्ट करके मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, ठीक है। जो कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव इशू हो सकते हैं, उनको समझना भी जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए, मैं अपना जो मेन कैमरा है उसको कनेक्ट करके आपके बीच वापस अपने स्क्रीन को कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए, अब मैं आपको यहाँ पर कुछ बताना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए, ये वीडियो में सिखाने के लिए मैं वो कर रहा हूँ और लाइव प्रैक्टिकल वर्क करके दिखा रहा हूँ, तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ी सी जो समस्या वो हो सकती है। लेकिन ज्यादा ही ब्राइटनेस कर दी इसमें, है ना।
कोई नहीं, इसकी जरूरत नहीं है हमें ज्यादा देर, लेकिन इसमें ब्राइटनेस कुछ अति कर दी है। ठीक है, कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, अपने को तो स्क्रीन से ही पढ़ना है। All in one video toolbox to convert, compress, and edit videos and much more. बस एक सेकंड अभी कर देता हूँ इसकी ब्राइटनेस का भी। चलो खैर, अपने को इससे करना भी क्या है, थोड़ी देर सुनो। अभी आपने ध्यान से देखना, वीडियो बनाते हुए ये सेंसिटिविटी बहुत जरूरी है। अब जैसे इसने जो वो वर्ल्ड का मैप दिखाया था ना, उसमें इंडिया का मैप इसने गलत दिखाया था, और ये मुद्दे हैं जो हमारे मतलब हमारी प्रेस्टीज के भी है, हमारे देश के भी है, ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, यदि वो कोई ऐसी, जैसे आप देश की बात कर रहे हो ना जब, तो देश से रिलेटेड चाहे मैप हो चाहे फ्लैग हो, अब इसने जो वो दिखाया वो ऑब्जेक्शनेबल है। चलो ये तो लर्निंग की वीडियो है, लेकिन यदि मैं इसको नोटिस नहीं करता तो इसी बात को बहुत नेगेटिवली भी रिप्रेजेंट किया जा सकता था। आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, और ये भाई ये गलतियां कर सकता है कई बार। तो इंडिया के मैप में उसने गड़बड़ दिखा रखी थी, और हमें इस बात से मतलब खराब भी लगा, ठीक है, लेकिन हमें उस चीज को चेक करके ही वो करना चाहिए। लेकिन क्योंकि लाइव प्रैक्टिकल बना के दिखा रहे हैं आपको, तो आप भी समझ सकते हैं कि भैया जब लाइव प्रैक्टिकल बना के दिखाएंगे तो वो कुछ भी बनाएगा तो वही दिखेगा, ठीक है। और हम अपने देश की सेंसिटिविटी के लिए इतना ध्यान रखते हैं भाई कि हमने तुरंत इस मैटर को नोटिस कर लिया, ठीक है। चलिए, अब ये तो हुआ क्या, अब अगला मैजिक देखो भैया। चलो ये तो फिर भी मामला कमजोर था, ठीक है। अब तूफान दिखाते हैं तुमको, तूफान, ठीक है। इसी में अगला मैजिक देखिए। यार एक बात बताओ, ऐसे एक एक सीन करके कब तक बनाएंगे भाई, ठीक है। एक काम करते हैं, आग लगाते हैं पानी में, ठीक है। ये कितने सीन बच गए, 5 सीन बच गए। एक काम करते हैं, ठीक है, लीजिए भैया। अब यहाँ पे उठाते हैं सीन 6 से लेके और सीन 10 तक एक साथ उठाते हैं। अब दिखाते हैं तुम्हें एजेंट क्या होता है, एजेंट का खेला देखो। 5 सीन उठाए, ओके किए, यहाँ पर आए, ठीक है। अब भैया एजेंट, यहाँ पर एजेंट भैया है, एजेंट भैया पे क्लिक किया, पेस्ट किया, एजेंट भैया पे क्लिक किया और पेस्ट किया, और ये एंटर मार दिया, ठीक है। अब ये सोच रहा है, अब क्या होगा, अब ये होगा भाई साहब कि जो आपका जो एजेंट है, ठीक है, जब तक ये एजेंट बना रहा है ना, तुम देखते जाओ ये क्या कर रहा है, तब तक मैं दूसरे कैमरे की जो ब्राइटनेस है वो साथ में सेट कर देता हूँ, ताकि मुझे जो इसके बाद, वैसे मैं इसमें कैसे दिखता हूँ, इसमें तो यार ये तो लो विजन वाला कैमरा, तो मजा नहीं आएगा इसमें, है ना। मैं इसकी ब्राइटनेस वगैरह है जो वो सेट कर देता हूँ तब तक। ये देखो ये लग गया। अब ये क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखो। ये कह रहा भाई साहब तू 5 सीन एक साथ बनवाना चाह रहा है, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि तू 5 सीन एक साथ बनवाना चाह रहा है, 150 क्रेडिट जाएंगे। मैंने कहा अप्रूव भैया जी, ओके भाई साहब बनाओ यार। मैं कहाँ से पेश करता फिर बनाना 500 के 5 सीन, मुझे क्या मतलब है। ये लो भैया 500 सीन का लग गया। दिस इज कॉल्ड एजेंट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एजेंट। जब तक ये बना रहा है टाइम लगाएगा, तब तक इसकी सेटिंग ठीक कर लेते हैं, नहीं तो आपका तो मजा है वो किरकिरा हो जाएगा। बस दोस्तों बीच में हटना नहीं वीडियो से, मतलब इतनी जान लगा दूंगा कि मतलब आपको अल्टीमेट लेवल का मजा आ जाएगा, ठीक है। बस पेशेंस रखे रहिए, बिल्कुल
देखते जाओ जी, ठीक है, देखते जाओ भैया क्या कर रहा है, देख रहे हो स्क्रीन पे लाला एजेंट, ठीक है। और ये देखो ये पूरे सेगमेंट्स में बनाएगा, कोई गड़बड़ भी नहीं करेगा, सीन की नंबरिंग भी वही करेगा, फिर आप उसको जोड़ देना अपनी वीडियो में जाके, कोई बहुत बड़ा लफड़ा नहीं है, ठीक है। ये 5 सीन की है, इसमें जोड़ देगा अभी इसको, देखो ये बना रहा, बनाने दो इसको, ठीक है। चलिए देखिए हो गया है ना कनेक्ट कर करना। अब आ जाओ यहाँ, ये देखिए ये बना दिया भाई साहब। अब तुम देखो अगला सीन देखो, ये रहा, सुनो इसको। जल्दबाजी में भागना मत क्लास छोड़ के, ठीक है, दुनिया हिल जाएगी, ठीक है। स्क्रीन चौंक रही थी और कुछ चेहरे ऐसे थे जिनकी एक चुप्पी लाखों लोगों की नींद छीन सकती थी। देख रहे हो कैरेक्टर्स, ठीक है। और ये तो स्क्रिप्ट को और ज्यादा बेहतर लिखोगे तो और ज्यादा बेहतर आउटपुट आएगा। अब ये देखो अगली 500 बना दिए एक साथ। यहाँ के लिए ये केवल सीमा की लड़ाई नहीं थी, ये सम्मान, अस्तित्व और शक्ति का प्रश्न था। देखते रहो तुम 500 तो इसने बनाए हैं एक झटके में। वर्षों से लगे प्रतिबंध, परमाणु कार्यक्रम पर दबाव और मध्य पूर्व में बढ़ती सैन्य घेराबंदी ने तेहरान को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया था। ठीक है जी, अब ये देखो जहाँ पीछे हटना कमजोरी माना जाता है और आगे बढ़ना युद्ध को जन्म दे सकता है। देख लो भाई साहब। दूसरी ओर अमेरिका था, जिसके युद्धपोत खाड़ी में तैनात थे, जिसके उपग्रह आसमान से हर गतिविधि देख रहे थे। चलो अब इसको एक बार कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पर। ये देखो ये 5 सीन थे ना, इसको वापस खोल लो, कहीं नहीं जाना। 5 सीन जो ऐड किए थे हमने उसे वापस खोल लो और यहाँ पर आ जाओ। बस ये लास्ट चीज है, एडिट वाला काम भी करके दिखाना है। अब ये लास्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे प्लस किया, ऐड में गए और जो छठी वीडियो थी वो कौन सी थी? अब छठी वीडियो ये थी। 3 कितने हैं? 1 2 3 4 5 तो ये हो गए थे, फिर 6 7 8 9 10 ये है ना, ये वाला बोर रूम वाला। तो ये बोर रूम वाला सीन पे क्लिक किया, इसको ऐड कर दिया। गलत सीन गलत जगह नहीं हो जाए ऐड, ठीक है। अब ये ऐड कर रहा है, पेशेंस रखना है, ठीक है। फिर इस पे प्लस करके फिर ऐड क्लिक करके ये बोर रूम वाला हो गया, स्ट्रेटेजिस्ट वाला पे क्लिक कर दो, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। इसको ऐड कर दो, ठीक है। उसके बाद अगले पे आ जाओ, ठीक है, अगले पे आ जाओ, अगले पे आ जाओ। इस पे क्लिक किया और ये आ गया स्ट्रेटेजिस्ट सिंबल वाले पे आ जाते हैं, इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। कहा है कि वीडियो एडिटिंग दुनिया हिला देंगे, वीडियो एडिटिंग भी। ऐड क्लिक, ये स्ट्रेटेजिस्ट पे आ गए, ऐड टू सीन कर दिया और ये आ गए। एजेंट का भी कमाल देख लिया तुमने, ठीक है। बस असली खेल सारा स्क्रिप्ट राइटिंग में है और उसके बाद इन ट्रांजिशंस को समझने में, ठीक है। अभी तुम्हें पता है इसमें ना 100 चीजें और हो सकती है। मतलब जो ये अंतर 2D एनिमेशन बन रहा है, इसको और बेहतर बनाया जा सकता है। ये तो अभी हम सिर्फ ये बता रहे हैं आपको
भैया देखो वीडियो जब आपको बनानी है ना तो कैसे बनानी है, मतलब बन कितनी आसानी से जाती है, बाकी वीडियो की स्क्रिप्ट कैसे लिखनी है, उसमें कैरेक्टर कैसे ऐड करने हैं, इसमें मैं बिल्कुल ट्रम्प की शक्ल का बंदा ऐड कर सकता था, ट्रम्प की शक्ल का, लेकिन भैया हमें ये भी तो ध्यान रखना है ना भाई, टाइम भी बचाना है, सही से सिखाना भी है, सारी चीज करनी है, ठीक है। लाइव को 2500 पार करो, ठीक है, क्योंकि अब सिंगल दिखा दिया, एडिट दिखा दिया, अब और भी कुछ आना है, ठीक है, देखते जाना, ठीक है, देखते जाओ तो क्या क्या होने वाला है, ठीक है। देखो 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 भैया देखो, देखना ध्यान से बिल्कुल भैया, अभी देखते जाना तुम और क्या क्या करके दिखाऊंगा मैं यहाँ पे तुम्हें, ठीक है। इसको एक्सपोर्ट करने दो, पहले ये 1 मिनट 40 सेकंड की वीडियो हो गई, अब तुम देखो इसको कितना जोर पड़ा तुम्हारा बनाने में, कोई भी तुम्हें ये सीधा मैसेज यूट्यूब पे बता दे तो तुम मुझे बता देना, क्योंकि भाई सबको ये है कि ये, क्योंकि लोगों को आता ही है, इसके आगे की बात लोगों को आती है, इसलिए लोगों को लगता है बस यही है, ये सिखा दिया तो तुम्हें पैसे कौन देगा, ठीक है भाई, ऐसा नहीं होता है, इतनी चीजें एआई में आपको सीक्वेंस में समझनी ही पड़ेगी और कोई इलाज नहीं है। और ये वीडियो देखो आपको 2D डॉक्यूमेंट्री खत्म, रात 2:17 फारस की खाड़ी के ऊपर आसमान असामान्य रूप से शांत था। नीचे समुद्र काला दिखाई दे रहा था, लेकिन उस कालेपन के भीतर दुनिया की सबसे खतरनाक बेचैनी छिपी थी। जलडमरू मध्य से गुजरते तेल के जहाज धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। हर जहाज के साथ दुनिया की अर्थव्यवस्था की ये देखो अपना मैप गलत दिखा रखा है आमजादों ने, आमजादे बोलने के भाई हमारे देश का नक्शा गलत दिखाएंगे तो अभी प्रैक्टिकल वर्क है, इसलिए मजबूरी है। अलग अलग कमरों की रोशनी मुझे नहीं थी, नक्शे खुले थे, स्क्रीन चमक रही थी और कुछ चेहरे ऐसे थे जिनकी एक चुप्पी लाखों लोगों की नींद छीन सकती थी। ईरान के लिए यह केवल सीमा की लड़ाई नहीं थी, ये सम्मान, अस्तित्व और शक्ति का प्रश्न था। वर्षों से लगे प्रतिबंध, परमाणु कार्यक्रम पर दबाव और मध्य पूर्व में बढ़ती सैन्य घेराबंदी ने तेहरान को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया था जहां पीछे हटना कमजोरी माना जाता है और आगे बढ़ना युद्ध को जन्म दे सकता था। दूसरी ओर अमेरिका था, जिसके युद्धपोत खाड़ी में तैनात थे, जिसके उपग्रह आसमान से हर गतिविधि देख रहे थे। चलो अब ये हो गया, चलो भैया अब आते हैं फेज 2 पे। देखो अब सवाल आता है, सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि ये जो प्रॉम्प्ट है ये आपको कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ठीक है। मैं वीडियो के लास्ट के 5 मिनट में तसल्ली से बताऊंगा प्रॉम्प्ट कैसे मिलेगा, कहाँ भेजूंगा और कैसे आप इससे जुड़ सकते हैं। अब दूसरी बात समझिए, टाइप 1 वीडियो आपने देखा, लेकिन अब सवाल है क्या ये वीडियो आपको परफेक्ट लगा, तो मैं आपको बताता हूँ नहीं, इसमें आप क्या कर सकते हैं, जो हर प्रॉम्प्ट है, हर एक प्रॉम्प्ट जितना तुम्हारी सबसे बड़ी मसला इन्हें खत्म कर दी कि वीडियो नहीं बना देगा, लेकिन तुम सोच तो कम से कम ढंग से लो। यदि मुझे अपने लिए वीडियो बनाना हो और मैं बनाऊंगा 2D का चैनल बना रहा हूं मैं, ठीक है, मेरी टीम में 2 लोग उसके ऊपर लगेंगे और देखना तुम कितनी जल्दी ग्रो करेगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, हर जो सीन क्रिएट करा रहे हो ना 10 सेकंड का, तुम्हें पता है हर वीडियो हर 10 सेकंड इंगेजिंग होनी चाहिए, इसमें बीच में गैप भी आना था, जैसे इंडिया का मैप भी करा दिया, तो हमें हर सीन बिल्कुल आराम से प्रॉम्प्ट तैयार करना है हर सीन का, और हर सीन का प्रॉम्प्ट तैयार करके पहली ही बार में जब जहां पर इंडिया का मैप आने की गुंजाइश हो तो वहां पर आप डालो उसको कि भाई ये मैप चाहिए हमें, इंडिया का मैप इसमें ऐसा दिखना चाहिए, वो सब कुछ हो जाएगा। टाइप 1 वीडियो, पहले तुम मुझे अब ये बताओ, मैं तुम्हारा कमेंट आप पढ़ रहा हूँ बीच में एक बार, अब तुम चैट को आग लगा दो, ठीक है, मतलब जितनी तेज लगा सकते हो। मैं अभी आपके कमेंट पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि पहले तो ये बताओ क्या वीडियो एडिटिंग और आपके लिए चुनौती रहेगी, क्या इस तरह की वीडियो जनरेट करना क्या कोई टेक्निकल वर्क है? नहीं है। और
एआई में ऐसी हजारों चीजें जो तुम सीख नहीं रहे हो। तुम आज ना गांव देहात के बच्चे हो, तो मुझे पता है मेरे पास अमीरों की औलादें नहीं है भाई, मेरे पास मेरे गांव के मेरे जैसे संघर्ष करने वाले परिवारों के बच्चे हैं। लेकिन तुम्हें कोई कहे, तुम्हें लगता है कि पता नहीं है क्या लेगा, ठीक है भाई, मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूँ, एआई जीवन का आधार है और मैं पूरी ईमानदारी से सिखाऊंगा, ठीक है। और अभी मैं बैच नहीं बेच रहा, अभी मैं लास्ट में कुछ चीजें बताऊंगा, उसको ध्यान से सुन लेना, ठीक है। तो पहले एक बार दिल भेज के ही बताओ, क्योंकि इतने लोग हो तो वैसे तो समझ में आएगा नहीं, ठीक है। अगली चीज बहुत शानदार है, अवतार बनाना सिखा रहा हूँ। अगली चीज अवतार, खुद का अवतार, ठीक है, अभी देख लेना तुम, अवतार बनाना सिखा रहा हूँ। तो क्या करो अवतार बनाने के लिए, दिल भेज दो और वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। लाइक कम है वीडियो पे, ठीक है। एक बार दिल भेज दो और वीडियो को लाइक कर दो ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ, ठीक है। कमेंट में दिल भेजो यदि आपको सच में ऐसा मजा आ गया है कि यार वाकई में कोई एआई में तुम्हारा बेड़ा पार लगा देने वाला तुम्हारा भाई कोई यदि मैदान में तुम्हें दिख रहा है, तो मेरे भाई तुम मतलब दिल की लाइन लगा दो, लाइन लगा दो दिल की, शाबाश, बहुत बढ़िया। कोई कोई बीच में नाराजगी दिख रहा है, ऐसे लगा है ठीक है मेरी जान ले ले, मेरी किडनी गुर्दा ले ले, अभी भी तू मेरे पे शंका कर रहा है, ठीक है। और भाई गूगल ने ऐसे बहुत अपडेट लॉन्च किए हैं, मैं ऐसे वीडियो बीच बीच में लाता रहूंगा, और बाकी जो पढ़ाना वो तो पढ़ाते ही रहेंगे, टेंशन मत लो। चलो आगे भैया, आप क्या बनाना सिखा रहे हैं, तुम्हारा अवतार, तुम्हारा क्या अवतार। अभी तुमने देखा इसमें ना मेरी आवाज नहीं थी, मेरी आवाज अलग है, यहाँ पर आवाज अलग है। अब तुम्हें अवतार बनाना सिखाते हैं, आ जाओ अवतार बनाते हैं, ठीक है। देखो भैया अवतार बनाते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। आ जाओ भैया, आप पहले अवतार ही बना लेते हैं, ठीक है। कौन सी बड़ी बात है अवतार बनाना, अपना अवतार बनाते हैं। चलो देखो मेरी कुंडी थोड़ी कम दिखेगी, चलेगा तुमको, है ना, ठीक है। देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या करना है, अब आपको अवतार में जाना है, तो भैया सबसे पहले गूगल में जाओ, सीधा यहाँ पर जेमिनी ओपन करो। ये जेमिनी खुल गया हमारा भाई, गूगल जेमिनी बोलते हैं इसको, यही है गूगल जेमिनी, यही है ओमनी, यही है नैनो बनाना, यही है सब कुछ। चैट जीपीटी अलग मंच है, गूगल जेमिनी अलग मंच है, ठीक है। तो मतलब मैं इसके क्रेडिट आपको इकट्ठे करना सिखा दूंगा, आपको 1000 क्रेडिट कैसे फ्री में मिलेंगे वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बता दूंगा। एक में क्रेडिट बनाना सिखाऊंगा, प्रॉम्प्ट बनाना सिखाऊंगा, और लास्ट में मेरा प्रमोशन भी करूंगा, इंट्रोडक्शन ले लो, ठीक है, चिंता मत करो, ठीक है। सारी चीजें जरूरी है ना, और मेरा प्रमोशन नहीं हो, तुम्हारी जिंदगी का प्रमोशन है, ठीक है। यदि किसी को थोड़ी सी भी गलत फहमी है तो दूर कर देना। अब देखो भैया यहाँ पर क्या है, ऐसे जेमिनी का इंटरफेस खुल जाएगा, मैं दोबारा खोल के दिखा देता हूँ। ये गूगल जेमिनी है, ये इंटरफेस खुल गया। अब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, तो ये मत सोचना मेरा वर्जन कौन सा पेड है फ्री है, कुछ नहीं है, सब में मैं तुम्हें यही काम आप जो फ्री में 1000 क्रेडिट लेके काम करना सिखाऊंगा, ये काम आप उससे भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अवतार का ऑप्शन है, और आप अवतार पे क्लिक करेंगे। अब देखिए मैंने मेरा अवतार बना रखा है, लेकिन आपको नहीं बनाना अवतार, तो आप क्या करेंगे, देखिए जैसे मैं रीटेक कर लेता हूँ, अब रीटेक करूंगा मैं, तो ये मैंने रीटेक कर दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर रीटेक कर दिया। अब तुम्हें चाहिए तुम्हारा फोन, ठीक है। देखो मैं बहुत अमीर आदमी नहीं हूँ, मेरे पास वीवो का फोन है ना। अब तुम्हें क्या करना है, ये स्कैनर आ गया, तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा होगा तुम्हें कि ये स्कैनर आ गया है। अब तुम्हें क्या करना है, अपने फोन में सिंपली क्या करना है, गूगल खोलना है, ठीक है। मेरे को एयरप्लेन मोड ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं तुम्हें सब प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, लोड नहीं लेने का, ठीक है। अब यहाँ पर तुम्हें ये क्या करेगा, ये स्कैनर आ गया, तो अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ दोस्तों, यहाँ पर मैं करने वाला हूँ, देखिए गूगल 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 खोल लिया। गूगल में आपके यहाँ पर थोड़ा स्क्रीन बड़ी करके दिखानी पड़ेगी, ठीक है। गूगल में ये देखिए गूगल खोला है, यहाँ पर कैमरे का ऑप्शन आता है, इस कैमरे पे क्लिक करेंगे आप, ठीक है, गूगल लेंस वाले कैमरे पे, और ये जो स्कैनर है इसको स्कैन कर लेंगे, ठीक है। अभी देखते जाना दादा क्या होने वाला है। ये मैंने स्कैन किया, उसके बाद लिंक आ जाएगा, उस पर क्लिक करना है। अब ये मैंने यहाँ पर कर लिया, अब देखना मैं क्या क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। अवतार सेट करना है, आवाज देखना भाई साहब, मेरी असली आवाज कैसे निकालेगा ये, ठीक है। अब देखो ध्यान से,
ये एग्री का ऑप्शन आ गया, यहाँ पर मैंने एग्री कर लिया, ठीक है। अब ये एग्री कर लिया, अब ये पूरा देखो कैसा कैसा आ रहा है, ये देखो कैमरा खोल लिया, अब मैंने कैमरा खोल लिया, ठीक है। अब मैं इसको सबसे पहले अपना अच्छा सा वो दे देता हूँ यार, मेरे फेस पे लाइट वाइट आई, ठीक है। पहले मैं, हाँ ये मैंने लोकेशन सेट कर ली और मैंने यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक किया। टू मैनी फेसेस विजिबल, देखो ये पीछे फेस आ रहा है, ठीक है। तो मुझे इसका इलाज करना पड़ेगा, इसको नीचे कर देते हैं। अब देखो, अब मैंने इसको कर लिया यहाँ पर 40, 60, वो कह रहा है नंबर तेज बोलो, स्क्रीन पे कुछ नंबर आएंगे, वो आपको बोलने हैं, क्यों बोलने हैं, ताकि आपकी आवाज वहां से कॉपी कर लेगा। देखो मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, यार मेरा फेस सही लेना, हाँ ये सही है। नंबर तेज बोलने भाई, पास कर लेते हैं। स्टार्ट। 40, 60, 31, 47, 77, 75, हो गए नंबर्स पूरे। अब ये कह रहा है इधर मुझे घुमा दी मैंने, अब इसने कर दिया भाई, ठीक है। ये होता प्रोसीजर, ऐसे कहता है मुंडी इधर घुमा उधर घुमा, अपनी आवाज में वो नंबर बोल, ठीक है, ये सब करेगा ये, ठीक है। अब ये मेरा अवतार वहां पर अपने आप अपलोड कर देगा, देखना ये अभी अपने आप बोल देगा कि भाई काम कंप्लीट हो गया, आप अपनी स्क्रीन कनेक्ट कर लो, ठीक है। तुम्हारी संख्या कम नहीं होनी चाहिए, देख लेना, गड़बड़ कर दूंगा नहीं तो है ना, सही नहीं बताऊंगा बात, यदि संख्या कम हुई 2000 के पार, 2000 के पार, क्या ये सब चीजें हम डिजर्व नहीं करते, ठीक है। चलिए अब ये कह रहा है कि अब भैया हो गया, ठीक है। ये देखो ये कह रहा है इसको पोस्ट कर दो, हटा दिया मैंने। अब वो कह रहा है ठीक है भैया, अब अवतार वाला मामला हो गया, अवतार हो गया। अब आ जाओ तुम न्यूज चैट पे, ठीक है। अब यहाँ से तुम क्या करो, यहाँ से जाओ तुम, इसी पे जाना है वापस तुमको, ये देखना अभी अवतार पे गए तुमने, यहाँ कहा यूज अवतार, यूज अवतार किया, ठीक है जी।